हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमैचेबल वंस अगेन। मैं मारुति तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का फ्लूइड मैकेनिक्स के इस तीसरे और आखिरी सेशन में, जहां हम लोग करने वाले हैं विस्कस फ्लो के बारे में बातें। ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव डन वंडरफुली द डेवलपमेंट ऑफ fluid kinematics and the laws of fluid dynamics, particularly for ideal flow situations where we have inviscid and incompressible, both idealistic scenarios existing. A flow that is very close to ideal flow, which is called potential flow, has also been analyzed, and we have seen that in case of potential flow, we have a mathematical beauty of psi and phi existing. पूरी वेलोसिटी फील्ड को दो स्केलर फंक्शंस में बदलकर एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी और एनालिसिस को रोमांचक बना देता है। लेकिन वो संभव नहीं है हमेशा, क्योंकि फ्लूइड फ्लो हमेशा इनविसिड और या इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वेलोसिटी फील्ड का डाइवर्जेंस भी जीरो हो, वेलोसिटी फील्ड इनकम्प्रेसिबल हो, और वेलोसिटी फील्ड, आप नोटिस करो, मैं वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं, मैं वेलोसिटी फील्ड कह रहा हूं, और वेलोसिटी फील्ड का कर्ल भी जीरो हो, वेलोसिटी फील्ड की घूमने का जो इफेक्ट है वो भी जीरो हो। तो कर्ल भी जीरो हो, दैट मींस ओमेगा जीरो हो, फ्लो इरोटेशनल हो, एंड डाइवर्जेंस भी जीरो हो, दैट मींस कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, del dot v is equal to 0. And then the beauty called potential flow comes into the picture, where the whole velocity field can be described by assigning two scalar functions, Mr. psi and Mr. phi. अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल हो जाए तो वेलोसिटी फील्ड जो कि वेक्टर है उसे स्केलर फंक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उन स्केलर फंक्शंस के नाम हैं मिस्टर साई और मिस्टर फाई। फायदा यह है कि वेलोसिटी को आपको वेक्टोरियली ऐड करना पड़े अगर आप दो टाइप के अलग अलग फ्लो को सुपर इंपोज करके एक तीसरा फ्लो क्रिएट करना चाहें सिमुलेशन पर्पस के लिए या किसी भी रियल प्रैक्टिकल फ्लो को सिमुलेट करने के लिए। लेकिन स्केलर फंक्शंस को तो आप ज्यों का त्यों ऐड कर सकते हैं। स्केलर फंक्शंस यू कैन ऐड जस्ट लाइक दैट, बट अनफॉर्चुनेटली that beautiful world created by mathematics, that if a vector field has divergence also zero and a vector field has curl also zero, then that vector field can be expressed through some scalar functions, stream function and velocity potential function. Unfortunately, that beauty doesn't exist practically. So we entered into the compressible flow, but compressible flow is no less beautiful, given that बाबा मैक हर जगह छिपे हुए हैं और प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह से रियलिटी में फ्लो विस्कस होगा, और अगर रियलिटी में फ्लो विस्कस होगा तो विस्कस फ्लो के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, ये ध्यान रखना, जब हमने कॉम्प्रेसिबल फ्लो की एनालिसिस की तो फ्लो को इनविसिड मान लिया था, और जब हम विस्कस फ्लो की एनालिसिस करने वाले हैं तो फ्लो को इनकॉम्प्रेसिबल मान लेंगे। मतलब दो आइडियल असम्पशंस में एक आइडियल असम्पशन हम हमेशा लेकर चलेंगे। When we studied and analyzed compressible flow, at that time we still were holding on the assumption of inviscid flow, and now that we are dropping that assumption of inviscid flow and we are entering into the regimes of viscous flow, my dear friends, now we are going to not drop the second assumption, that is incompressible flow. तो एक्चुअली हम आइडियल फ्लो में दो बातें होती हैं, इनकॉम्प्रेसिबल और इनविसिड। एक बार हमने इनकॉम्प्रेसिबल को क्रॉस किया बट इनविसिड माना, तभी हम आइलर्स इक्वेशन यूज कर सके कॉम्प्रेसिबल फ्लो एनालिसिस में। और दूसरा असम्पशन होता है फ्लो का इनविसिड होना। अब इस बार हम मान रहे हैं कि फ्लो इनविसिड नहीं है, फ्रिक्शनल इफेक्ट कंसिडर करने ही पड़ेंगे। We will have to consider
फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, बट देन हम फिर दूसरा assumption लेकर चल रहे हैं कि चलो इनकॉम्प्रेसिबल है। सर अगर हमें ऐसा मानना हो कि फ्लो इनविसिड भी नहीं है, फ्रिक्शनल इफेक्ट भी प्रेजेंट है, और ऐसा मानना हो कि फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल भी नहीं है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स भी प्रेजेंट हैं, वैसा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है वत्स, लेकिन वो आपके स्कोप के बियॉन्ड है। वो आप जब मास्टर्स में एंटर करोगे वहां आप उसको लेकर भी मॉडलिंग करोगे। ऑफ कोर्स द एनालिसिस and the research is possible and is continuing to analyze the flows that are viscous as well as compressible. Frictional effects are also present and compressibility effects are also present. But analyzing such a flow is beyond your scope. So let's go ahead and now take off from here. Now take off from here. So ideal flow, we have incompressible assumption, we have inviscid assumption. Viscous flow, incompressible assumption we are still holding on, but viscous assumption we are dropping. Viscous assumption we are dropping. It is no more viscous. Similarly, in case of compressible flow, that analysis we have done, inviscid we still assumed, but it was not compressible. And that's why assuming inviscid allowed us to be using Euler's equation, since we had that thing. Now, in case of viscous flow, because we are still assuming incompressible, we will have continuity valid. And second one, the Euler's equation is not going to be valid. Now, viscous effect consider करने ही है तो आपको Navier-Stokes equation use करनी होगी. So for this chapter, two big tools for us are continuity and Navier-Stokes equation. इस चैप्टर के लिए हमारे पास दो बड़े हथियार जो हैं वो हैं कंटिन्यूटी और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इससे पहले कि हम एनालिसिस में जाएं, समझ लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल विस्कस फ्लो का क्लासिफिकेशन। You see, we are going to have sometimes a solid boundary surrounding the fluid. A solid boundary surrounding the fluid, like in case of journal bearing. Like in case of a machine tool, between machine bed, there is a lubricant. So there is a fluid layer or there is a fluid mass being surrounded by the solid. But sometimes the solid is being surrounded by the fluid. It is the solid body that is surrounded by the fluid. It is the solid body that is surrounded by the fluid. If solid is surrounding the fluid, we call it internal viscous flow. And if fluid is surrounding the solid body, तो fluid बाहर है, इसलिए external viscous flow. तो अभी इस 7वें चैप्टर में हम लोग internal सीखेंगे, 8वें चैप्टर में हम लोग external सीखेंगे. In 7th chapter, we will understand internal. In next chapter, we will understand external. Now, second thing, the study of viscous flow becomes further complicated, and so complicated that no universal or no such sophisticated theory is present that can still answer everything. It's further complicated by random motion components of fluid. तो fluid जब बहुत कम velocities पर flow करेगा या फिर बहुत ज्यादा viscosity होगी उसमें, तो वो disciplined flow को follow करेगा और इसकी theoretical analysis possible है. लेकिन जब fluid एक ज्यादा velocity पर flow करेगा या फिर एक बहुत light fluid होगा जिसकी viscosity बहुत ज्यादा ना हो, चिपचिपा ना हो fluid, एक बहुत लाइट का मतलब डेंसिटी से नहीं है, लाइट का मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है फ्लूइड की बॉन्डिंग में. फ्लूइड बॉन्डिंग डजंट हैव स्ट्रेंथ, सो मॉलिक्यूल्स कैन ब्रेक एंड कैन क्रिएट अ chaos. They can create a lot of turbulent, lot of cross mixing. Then it will start showing indisciplined behavior. And interestingly, while we have reached to the moon and while we are exploring in universe
And while we have excelled so much on quantum mechanics, and while we know now that how time and space curves are there and in gravity fields, my dear friends, we don't still have one theory that can answer everything for turbulent flow. For such an indisciplined flow, we only have semi-empirical things available. That means थोड़ी theory, थोड़े practical experiments के through result निकालो और उन्हें use करो. But ये trouble वहां पर enter करती है और इसीलिए हम इसे turbulent flow कहने वाले हैं. But laminar flow is pretty much doable. Turbulent, semi-empirical results are there. I will try my level best कि आप इसको भी समझ सकें. आते हैं तीसरी बात पर, क्या क्या टूल हम यूज करने वाले हैं इस विस्कस फ्लो की एनालिसिस में. वेल, हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर 0, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेम थिंग, डो बाई डो एक्स ऑफ यू, लीनियर स्ट्रेन रेट, डो बाई डो वाई ऑफ वी, लीनियर स्ट्रेन रेट, डो बाई डो जेड ऑफ डब्ल्यू, लीनियर स्ट्रेन रेट, डो बाई डो आर ऑफ वी आर, लीनियर स्ट्रेन रेट, डो बाई आर डो थीटा ऑफ वी थीटा, लीनियर स्ट्रेन रेट, and sum of linear strain rates becomes volumetric strain rate. Volumetric strain rate must be equal to 0 if you want the flow to be incompressible. अगर आप चाहते हैं कि flow incompressible हो तो volumetric strain rate को 0 होना पड़ेगा. Coming to the second tool is Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation, pressure force, viscous force, gravity force is equal to density into acceleration. Acceleration आपको याद ही होगा that अगर आप लिख रहे हो x में acceleration तो dou u time x y z u v w. Dou u time x y z u v w. Similarly, dou v time x y z u v w. Dou w time x y z u v w. So, इन सब चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं. जिन्होंने पिछले पार्ट्स कंप्लीट ना किए हों, मेक श्योर दैट आप वो पिछले पार्ट्स कंप्लीट कर लें. ऑल राइट, सो नाउ वी नो इंटरनल वेयर फ्लूइड इज सराउंडेड बाय अ सॉलिड बाउंड्री and external viscous flow is where fluid is surrounding the solid boundary. Laminar flow, streamlined or layered or disciplined flow. Turbulent flow, there is a lot of chaos, there is a lot of indiscipline, there is a lot of cross mixing. Turbulent, बहुत सारी क्रॉस मिक्सिंग होगी, बहुत सारा indiscipline होगा, एक लेयर टू लेयर टू लैमिना फ्लो मेंटेन नहीं होगा. There is no lamina to lamina. आपने देखा होगा ना, प्लाईवुड को कहते हैं लैमिनेटेड शीट्स. सो लैमिना वर्ड का मतलब ही है कि परत दर परत. Lamina means literally lamina word, Lamina. That word means that you are having layer, then layer, multiple layers. Second thing, we have two tools, continuity, momentum equation, pressure force, viscous force, body force is equal to mass into acceleration. Now, fourth thing is a bonus tool, and that is dimensional analysis. Dimensional analysis is a powerful thing that can tell you how a particular variable will relate to other parameters. For example, fluid mechanics से थोड़ा अलग होकर सोचो कि आप कोई बॉल फेंकते हो और आपको पता करना है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, और आपको बस इतना पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जितना टाइम उसने स्पेंड किया, जितने टाइम के बाद हम देख रहे हैं, इन दो बातों पर डिपेंड करेगा. एग्जैक्ट रिलेशन क्या होगी आपको नहीं पता. Exact relation will be what? Suppose we don't know that. So what I'm going to do is I'm just going to write the dimension of y, dimension of acceleration power something, and dimension of time power something. मैंने मान लिया कि चलो भाई y मुझे नहीं पता कि g के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है या रूट g पर डिपेंड कर रहा है. I don't know whether y is depending upon root g or y is depending upon g square. I don't know whether y is depending upon t power 5, or I don't know whether y is inversely proportional to t, so y is depending upon t power -1. I don't know that. So if I don't know that, I assume A and B, and here naturally A and B are the main unknowns.
Now they are the unknowns. How I find their values? I put dimension of y, dimension of g is meter per second square, dimension of time is time only. I have m power 0, L power 1 and t power 0 here. This side I have L power a and t power minus 2a and t power b as well. So ultimately I have m power 0, L power a and t power minus 2a plus b. I compare a is 1 and then I compare again minus 2a plus b is 0. So I get b is equal to 2a, b is equal to 2a, but a is 1. So I get b is equal to 2. Ultimately I get y must depend upon g into t square. एक रियल प्रैक्टिकल फिनोमिनन के बारे में अगर आपको ये ना पता हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कैसे डिपेंड करेगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको एक आइडिया दे सकता है. इफ रिगार्डिंग रियल प्रैक्टिकल फिनोमिनन, इफ यू हैव नो आइडिया हाउ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज गोइंग टू be a function of independent variables, then dimensional analysis can give you an idea of that. Then, yes, of course, हाँ, उसका एक drawback भी है, वो आपको अगर कोई constant present होगा तो वो नहीं बता सकता. If any constant term is present in the actual accurate relation, dimensional analysis can't tell you that because that 1/2 doesn't have any dimension. क्योंकि 1/2 की कोई डायमेंशन ही नहीं है, कोई यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशनल एनालिसिस वो आपको नहीं बता सकता. अब चलो हम विस्कस फ्लो पर आते हैं. लेट्स गेट बैक टू द विस्कस फ्लो. लेट्स से देयर इज अ फ्लूइड फ्लो हैपनिंग ओवर अ बॉडी. एक बॉडी के ऊपर से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और हमें जानना है कि यार ये ड्रैग कितना क्रिएट करेगा, फ्लूइड के फ्लो होने के कारण इस सॉलिड बॉडी पर कितना फ्रिक्शनल ड्रैग या सिंपली ड्रैग क्रिएट होगा. वैसे ड्रैग में फ्रिक्शन के अलावा भी प्रेशर का भी इफेक्ट आता है, लेकिन अभी के लिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर की. सो लेट्स अज्यूम दैट ड्रैग मींस द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. ड्रैग मींस द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. नाउ वी नो दैट इफ एयर वुड फ्लो and if water would flow, we won't have the same drag. And therefore, we believe that drag will depend upon some fluid properties like viscosity and density. Then we know that if there is a 50 km/h wind blowing and there is a 120 km/h wind blowing, then we will not have the same drag. If we will not have the same drag, that means drag must depend upon some characteristic velocity of the flow. And third thing, अगर एम्बेसडर पर आप देखो और ऑडी पर देखो तो ड्रैग फोर्स बराबर नहीं होगा. एम्बेसडर की डिजाइन उतनी एरोडायनामिक नहीं है, तो आपको पता है कि किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन पर भी डिपेंड करेगा ये ड्रैग. सो आई टेक द ड्रैग फोर्स अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स. व्हाट फ्लूइड with what motion, relative motion, solid body is moving with respect to fluid or fluid is moving with respect to solid, and some characteristic dimensions and कुछ characteristic dimensions. Okay, now मुझे नहीं पता कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जैक्टली कैसी है, तो मैंने मान लिया म्यू पावर ए, रो पावर बी, वी पावर सी एंड एल पावर डी पर वो डिपेंड कर रहा है. आई अस्यूम दैट इट इज डिपेंडिंग अपॉन म्यू पावर ए, रो पावर बी, एल पावर सी एंड म्यू पावर ए, rho power b, v power c and l power d. Okay, and this k is a numeric constant, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसकी जानकारी हमें डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे सकता. If there is a numeric constant present, dimensional analysis cannot give me that information. All right, so dimensional analysis cannot give me that information. So numeric constant has m power 0, l power 0, t power 0. Viscosity unit m, l minus 1, t minus 1. Density unit ml power minus 3 and velocity unit lt minus 1 and L unit is L. Force unit is mlt power minus 2, and now I just compare everything. After comparing everything, I get a plus b is equal to 1. So b is equal to 1 minus a minus c is equal to minus 2. So minus a minus c is equal to minus 2. So c is equal to 2 minus a. And then I compare the length ka power. Length power is minus a minus 3b plus c plus d is equal to 1. पहले जो हमें b और c मिले वो रख देंगे तो d भी मिल जाएगा 2 minus a.
अब क्योंकि यहां पर पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा हमें ए और बी दोनों एब्सोल्युटली मिल गए थे, यहां पर अननोन है हमारे पास 4, ए बी सी डी। इक्वेशंस बनी 3, मास के इंडेक्स को कंपेयर करके, लेंथ के इंडेक्स को कंपेयर करके और टाइम के इंडेक्स को कंपेयर करके। तो किसी एक अननोन के टर्म्स में ही बाकी सबको एक्सप्रेस किया जा सकेगा। So I'm expressing each and every unknown in terms of some one unknown, and that unknown is A. Now I simplify mu power A upon rho power A upon V power A upon L power A, and other than that we have rho power 1, V square and L square. Now I take that K rho V square L square to this side, then I have rho V L upon mu, rho V L upon mu power A. इंसिडेंटली दैट रो वी एल अपॉन म्यू की यूनिट अगर आप चेक करोगे तो वो यूनिटलेस है। सिमिलरली अगर आप एफ फोर्स अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर की यूनिट चेक करोगे तो वो भी यूनिटलेस है। इफ यू विल चेक द यूनिट ऑफ एफ डी अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, दैट इज यूनिटलेस, and if you will check the unit of rho v l upon mu, that is also unitless। जैसे कंप्रेसिबल फ्लो वाले चैप्टर में बाबा थे मैक बाबा, वैसे ही इस चैप्टर के बाबा हैं, इस चैप्टर के बाबा हैं रेनॉल्ड्स बाबा। जस्ट लाइक इन कंप्रेसिबल फ्लो चैप्टर, मैक was the baba, similarly here Reynolds baba must be present in throughout chapter number 7 and chapter number 8. My dear friends, this is again a dimensionless parameter and we call it by the name drag coefficient with k value 1 by 2. With k value 1 by 2 we call it drag coefficient. So I have successfully transformed a phenomenon involving 5 variables, 1 2 3 4 5, into a phenomenon involving 2 variables. फायदा, अरे फायदा ही फायदा। अब आपको जब एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे तो आप बोलोगे कि अरे डेंसिटी, अरे वेलोसिटी, अरे लेंथ, अरे विस्कोसिटी मैटर नहीं करती, रो वी एल बाई म्यू मैटर करता है। Now when you go to the lab and conduct experiments, you are not going to put rho at 2 different values, mu at 2 different values, v at 2 different values, and L at 2 different values. So you have to do 16 rounds of experiments. You're only going to keep Reynolds number at 1 different value and conduct the experiment. And you are going to conduct Reynolds number at another value and conduct the experiment. Advantage number 1, that dimensional analysis reduces the number of parameters through which you can deal with a phenomenon. That earlier the phenomenon is having 5 parameters. Now the same physical phenomenon can be described using 2 parameters. Dimensional analysis का पहला सबसे बड़ा फायदा, that dimensional analysis नंबर ऑफ पैरामीटर्स रिड्यूस कर देता है। जिस फिजिकल फिनोमिनन की एनालिसिस करने के लिए आपको 5 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती, वो फिजिकल फिनोमिनन आप 2 पैरामीटर्स से एक्सप्रेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एडवांटेज नंबर 2, that it makes experimentation easy and experimentation cheap. Earlier if you do experimentation just for 2 values of density, 2 values of viscosity, 2 values of velocity, and 2 values of length to measure the drag force on a real body in a wind tunnel, then you will have to do 16 experiments with various combination of rho, mu, v, and L. But now you say rho doesn't matter, v doesn't matter, mu doesn't matter, L doesn't matter. What matters is the combination of rho, v, L, and mu. What matters is the combination of rho, v, L, and mu. Array, keep rho, v, L divided by mu at one value, keep rho, v, L by mu at another value, and just check what is the coefficient of friction or coefficient of drag we are getting. What is the coefficient of friction or coefficient of drag we are getting? End of the day, we are going to say that
that the whole phenomenon that was imagined like this will now be described like this, that in a viscous flow, coefficient of drag will be inversely proportional to Reynolds number. हम कहने वाले हैं कि पूरी फिजिकल फिनोमिनन जिसे 5 वेरिएबल्स की मदद से एक्सप्लेन किया जाता, उस पूरी फिजिकल फिनोमिनन को अब हम 2 पैरामीटर्स के टर्म्स में इतने सिंपली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि किसी भी तरह के विस्कस फ्लो में, अरे उस विस्कस फ्लो की इंडिविजुअल डिटेल्स क्या हैं मैटर नहीं करता. And this is the third advantage. The dimensional analysis, advantage number 1, it reduces the parameters. Advantage number 2, it makes experimentation easy, cheap, and feasible. Advantage number 3, that it doesn't go into the individual details of the viscous flow. अरे ये पूरी कहानी कहते हुए मैंने कब कहा कि हम पाइप फ्लो की बात कर रहे, मैंने कब कहा कि हम कार के ऊपर से होने वाले फ्लो की बात कर रहे या किसी पाइप के अंदर से होने वाले फ्लो की बात कर रहे. इस पूरी कहानी को कहते हुए मैंने कब कहा कि हम लैमिनार फ्लो की बात कर रहे या टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे. इस पूरी कहानी को कहते हुए मैंने कब कहा कि किसी मछली, रुकी हुई मछली के आसपास से बहते हुए पानी की एनालिसिस कर रहे या किसी रुकी हुई हवा को चीरते हुए बहती हुई फुटबॉल की एनालिसिस कर रहे. Dimensional analysis has this big advantage that it doesn't go into the individual details of the phenomenon. It simply captures a general picture, and that general picture, my dear friends, is this. And that general picture is this. So now we know, before even entering into any kind of viscous flow, now we know that any and every viscous flow will have to follow this. किसी भी टिपिकल विस्कस फ्लो में एंटर करने से पहले हमें पता चल चुका है कि किसी भी तरह का विस्कस फ्लो हो, ड्रैग कोएफिशिएंट फंक्शन होगा 1 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर का. Any kind of viscous flow, drag coefficient will be a function of 1 upon Reynolds number. So advantages, it predicts functional relation, number of variables gets reduced, experimental cost gets reduced, and you can do easy modeling. Finally, we are on the first type of laminar viscous flow, internal viscous flow analysis. Viscous incompressible flow, internal, and first type is that we are going to have 2 parallel plates. हम लेने वाले हैं 2 parallel plates. थोड़ी देर के बाद जो boundary layers होंगी वो merge हो जाएंगी. The boundary layers are going to merge after some time. Like here the fluid will undergo no slip condition. Sorry. Here the fluid will have no slip condition, so it will affect more fluid particles, more fluid particles, more fluid particles, more fluid particles. धीरे 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 एक लेयर डेवलप होगी जहां पर वेलोसिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे. धीरे 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 एक लेयर ग्रो करती जाएगी जहां पर वेलोसिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे. एक समय ऐसा आएगा जब पूरे गैप में वो वेलोसिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे. एक तरफ से बाउंड्री लेयर और दूसरी तरफ से बाउंड्री लेयर दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी. So observation number 1, that due to the no slip condition, fluid layer adjacent to the solid boundary adopts the velocity of solid boundary itself. Observation number 2, molecules in contact with the boundary come to rest and they further retard adjacent molecules. This causes velocity differences in a narrow layer near the boundary. That narrow layer near the boundary is called as boundary layer. As more and more molecules get affected, thickness of boundary layer increases. Thickness of boundary layer increases. Thickness of boundary layer increases. After certain length called entry length,
the boundary layers merge, that entry length experimentally obtained value है इतनी। सर ये रटना है क्या? हाँ रटना है, ये रटना है। क्यों रटना है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का हम कुछ और कर भी नहीं सकते। बट इंटरेस्टिंगली देखो, बाबा के टर्म्स में ही मिला है ये एवरीथिंग। अल्टीमेटली नाउ दीज टू चैप्टर्स, सब कुछ रेनॉल्ड्स बाबा, अल्टीमेटली रेनॉल्ड्स बाबा प्रकट होंगे। सो हमारी एनालिसिस इसके बाद रहने वाली है। आवर एनालिसिस वुड बी फोकस्ड एट द segment after entry length. Okay, and after that, beyond entry length, since there is no vertical velocity existing, I get dou u by dou x is equal to 0 from continuity. That means u is not a function of x. That means u is not a function of x, 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 not a function of x. यहां देखो, 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 हर बार आपको सेम पिक्चर दिखने वाली है अगर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है तो फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। And that we have proved mathematically. Wow! Fluid mechanics, you beauty! Wow! Particularly laminar flow, you beauty. Laminar flow, you beauty. जबरदस्त, awesome. चलो शुरू हो जाते हैं पहले केस के साथ। मैं प्रूफ में नहीं जा रहा, लेकिन यहां पर प्रूफ गिवन है। कंटिन्यूटी और नेवियर स्टोक्स के, कंटिन्यूटी और नेवियर स्टोक्स को एक्स और वाई डायरेक्शंस में अप्लाई करके ऐसा प्रूफ किया जा सकता है दैट वेलोसिटी वाई का फंक्शन होगा किसी भी एक गिवन सेक्शन पर, और वो फंक्शन ऐसा दिखेगा। I'm not going into the derivation. This whole derivation is there in the PDF. I will include it. Telegram group @unmatchable classes. वहां से आपको PDF मिल जाएंगे. So make sure that वो ग्रुप पर आप हमेशा बने रहें, so that आपको जो भी अपडेट हमारी तरफ से रहे वो मिलता रहे. Just type without any gap, type @unmatchable classes. Without any gap, just type @unmatchable classes. Now, my dear friends, so I'm not going into the proof, but it can be proved that at one given section, velocity will be a function of y like this. इसमें अगर मैं y को 0 रख दूं तो मुझे maximum velocity मिलेगी, ये जो बाहर बैठी हुई value है. This value sitting outside is the maximum value, and if I put y is equal to 0, I will get that maximum velocity. So this whole value I can write as u max. This whole value I can write as u max. So the velocity profile gets simplified a little bit. Velocity profile हमें थोड़ी और सिंपल दिखने लगती है। इससे पहले कि ये velocity profile का फॉर्मूला आप याद रखें, एक चीज याद रखें कि ये velocity profile ओरिजिन को मिडिल पर मानकर डिराइव की गई है, नंबर 1। नंबर 2, हमने प्लेट्स के बीच का गैप 2b माना है, तो अगर कभी प्लेट्स के बीच का गैप b गिवन हो तो हमारे वाले b को उस गिवन b डिवाइडेड बाई 2 लिख देना। We have derived it using taking the origin at the center, at the middle of both the plates, number 1. Number 2, we have assumed to take the advantage of symmetry, we have assumed 2b plus b one side minus b another side, plus b one side minus b another side. तो अगर कभी उन्होंने सीधे सीधे गैप दे दिया इतना एज कैपिटल बी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल बी इज रिप्लेसिंग 2b. दैट मींस आवर स्मॉल b मस्ट बी रिप्लेस्ड एज कैपिटल B by 2. तो वैसे आप उसे ट्रांसफॉर्म कर लोगे. यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट लाइक दैट. ओके, सो
ये पहले केस के अगली बात पर चलते हैं. Let's now go to the next thing, that now we are going to understand the next thing. The next thing is that this Umax is what? Umax is minus b square by 2 mu dp by dx, minus b square by 2 mu dp by dx. dp by dx means pressure may change divided by length. Obviously pressure change must be negative. नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट ही फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होता है. प्रेशर डिक्रीज होगा तभी तो वो आपको पुश कर पाएगा. प्रेशर मस्ट डिक्रीज अलोंग द फ्लो, देन ओनली इट विल बी एबल टू पुश यू. प्रेशर मस्ट decrease along the flow, P1 must be more and P2 must be less, then only it will be able to push you against the wall friction. अरे भाई प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज ही होना चाहिए. अगर डिक्रीज होगा तभी P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा, और P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा, तभी वो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट फ्लो करा पाएगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट पुश कर पाएगा. सो dp by dx को मैं लिख सकता हूं डेल्टा p by l. ये दरअसल कभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मत सोचना कि umax नेगेटिव है, क्योंकि एक्चुअली dp by dx भी नेगेटिव है. सो dp by dx का नेगेटिव और इसका माइनस साइन, dp by dx नेगेटिव एंड माइनस साइन ऑफ दिस टुगेदर विल बिकम प्लस, टुगेदर इट विल बिकम प्लस. नाउ can we calculate the average velocity? Yes, of course. That's easy. That's easy. U is equal to Umax 1 minus y square by b square. याद रखना Umax is a function of pressure gradient. Umax pressure gradient का function है. So minus b square by 2 mu dp by dx minus b square by 2 mu dp by dx. Umax is a function of pressure gradient. Now we have done the whole calculation and we have found ultimately that the average velocity will be Umax upon 1.5. Average velocity Umax upon 1.5 के equal होगा. आप जानते हो कि basically average velocity find out करने का फंडा ये होता है कि वो सिंगल यूनिफॉर्म हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, जिसे अगर पूरे एरिया पर अप्लाई कर दिया गया होता तो आपको उतना ही डिस्चार्ज मिलता जितना डिस्चार्ज एक्चुअल वेलोसिटी दे रहा होगा. द डिस्चार्ज दैट एक्चुअल वेलोसिटी इज गिविंग यू, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया w into dy. The same discharge will be given by a constant hypothetical average value of velocity, a constant hypothetical average value of velocity. Cool. So ultimately we are going to get u average is equal to this much. Now my dear friends, let's नेवियर स्टोक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड है. न्यूटोनियन फ्लूइड है तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. लेकिन भैया अब मुझे u एज अ फंक्शन ऑफ y मालूम है. नाउ आई नो u एज अ फंक्शन ऑफ y, सो आई कैन डिफरेंशिएट दिस. I can differentiate this. If I differentiate this, I'm ultimately going to get कि shear stress linearly change होगा y के साथ. Shear stress will change linearly with y, whether you go to the positive y or from the origin you go to the negative y. Shear stress will keep becoming more and 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 more. What will be the maximum value? मैक्सिमम वैल्यू के लिए y को प्लस b रख दो या फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए y को माइनस b रख दो. Maximum value you put y is equal to plus b or you put y is equal to minus b, and ultimately that maximum value we are going to get 2 mu u max divided by b. 2 mu u max divided by b. u max को अगर u average के टर्म्स में रख दूं तो वो हो जाएगा 3 mu u average divided by b. That will become 3 mu u average divided by b. And आपको पता है कि u max प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. Umax can also be expressed in terms of pressure gradient minus b square by 2 mu dp by dx. So आप ultimately मैक्सिमम shear stress या वॉल पर जो shear stress होगी उसे आप प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं. You can express it in terms of pressure gradient as well. So now on one page, I have revised in the class the whole thing, okay, the whole thing. Cool. So first of all, using continuity and Navier-Stokes equations, हमने वेलोसिटी किसी एक गिवन सेक्शन पर, याद रखना वेलोसिटी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन से चौथे सेक्शन से पांचवें सेक्शन से छठे सेक्शन से सातवें सेक्शन पर चेंज नहीं होगी, क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी. Velocity will not change from one x to another x to another x to another x. That information will help us at the time of applying Navier-Stokes, because now I know that velocity is not a function of x. So this will become total derivative. And if you know the second derivative of u, array bhai, integrate it twice, then you will know that u is a parabolic function of y. Boundary conditions use karo, constants aa jayenge. इतना आसान है ये, इतना आसान है ये. अरे कितने अनफॉर्चुनेट, कितनी विडंबना है कि लोगों को सीधे सीधे रटा दिया जाता है. Isn't it irony that such an easy, conceptual, interesting thing is forced down the learner's throat, and they are asked to mug it up. That mug it up. इसका बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस यूज होते हैं. अच्छा सर, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस? हाँ, नेवियर-स्टोक्स. हिल जाओगे तुम अभी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस दिखा दूंगा तो. नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस आर लाइक, हमें भी नहीं पता था हम इतने डेंजरस हैं. प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, बॉडी फोर्स, डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन. सो गाइज, इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी, आप बड़े आराम से समझ लोगे. फिर हमने यू एवरेज फाइंड आउट किया. यू एवरेज फाइंड आउट करने के बाद अल्टीमेटली न्यूटन्स लॉ यूज करते हुए टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई फाइंड आउट किया. आप ये पूरी जो चाल है, ये पूरी जो प्रोसीजर है, this whole chronology, make sure that you understand this. Why? Because it will be repeated again and again and again and again throughout chapter number 7 and chapter number 8. Chapter number 7 और chapter number 8 में हम लोग इस कहानी को, इस कहानी के मील के पत्थरों को इसी तरह रिपीट करने वाले हैं. हम हमेशा स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी और मोमेंटम से, और पहला टारगेट होगा वेलोसिटी को as a function of sectional dimensions express कर पाना. दूसरा टारगेट होगा कैसे भी करके डिस्चार्ज को इक्वेट करके एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी को रिलेट कर पाना. तीसरा टारगेट होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को यूज करते हुए शियर स्ट्रेस कैसा फंक्शन होगा एक गिवन सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस का, वो एक्सप्रेस कर पाना. और उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यूज के 3 फॉर्मूलाज हैं. एक है यू मैक्स के टर्म्स में, दूसरा है यू एवरेज के टर्म्स में, और तीसरा है प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में. This whole procedure is going to be repetitive even for cylindrical pipe, flow through cylindrical pipe. We will always start with continuity and momentum, and then we will ultimately express the velocity profile as a function of cross-sectional dimensions. Then by equating the discharge on the basis of average velocity, same as the discharge calculated on the basis of this variable velocity, we will get the average velocity and maximum velocity ratio. Once we get this function, we will use Newton's law of viscosity to express the shear stress as a function of y. And once we know that कैसा रिलेशन है, तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और वो मैक्सिमम वैल्यू को आपको अल्टीमेटली
तीन फॉर्मूलाज याद रखने होंगे. फॉर मैक्सिमम वैल्यू यू विल हैव टू रिमेंबर 3 फॉर्मूलाज. अरे कितना, यही तो था हमारा शुरुआती लक्ष्य. दिस वाज our initial objective, that why do we want to study, why do we want to study, why do we want to study viscous flow analysis, so that we can estimate the power required to run a car against certain velocity of wind, so that we can determine and estimate the power required to cruise a submarine, so that we can estimate the drag losses that an aircraft engine will have to fulfill, so that we can improvise the aerodynamic design of vehicles, submarine bodies, and aircrafts. This was our objective, that please know how much frictional force the fluid is exerting on the solid body. तो चलो जानते हैं कितना फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के कारण सॉलिड बॉडी पर एक्ट कर रहा होगा. On certain length L. On certain length L, what is the frictional force being exerted by the fluid on the solid boundary? That we are going to write shear stress multiplied by area of the plate. Shear stress multiplied by area of the plate. Now, shear stress at the wall, we already know 3 mu U average upon B. So 3 mu U average upon B, and area of the plate, and I'm just multiplying by 2, dividing by 2, multiplying by density, dividing by density, multiplying by U average, dividing by U average. So now I get 6, and now I get U average, and U average becoming U average square, and now I get rho here, and now I get area of the plate here. In the denominator, I have rho, I have U average, I have 2B, and this mu I have taken to the denominator of denominator. सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बाबा को, सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बाबा को नमस्कार करेंगे. सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बाबा को नमस्कार करेंगे. बाबा प्रकट हो चुके हैं. डायमेंशनल एनालिसिस ने बताया था कि हमारी बात मान लो, चाहे फिर फ्लो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच से हो रहा हो, या फ्लो सिलिंड्रिकल पाइप से हो रहा हो, या फ्लो किसी कार के ऊपर से हो रहा हो, या फ्लो किसी पाइप के अंदर से हो रहा हो. Dimensional analysis told us that drag force will be inversely proportional to Reynolds number power something. Cool. Now that FD divided by half rho U average square is known as coefficient of friction, and I'm left with 12 divided by Baba. Baba prakat hue. Baba prakat hue. Darcy, this CF is known by the name, this coefficient of friction is known by the name Darcy's friction factor. So I get CF is equal to 12 divided by RE. I'm sorry, this is called as Fanning's friction factor. एक दूसरा फ्रिक्शन फैक्टर, इसका 4 गुना लिखते हैं. क्यों, उसका लॉजिक क्या है, हम पाइप फ्लो में देखेंगे. Why do we introduce one more frictional coefficient, one more friction factor? We have Fanning's friction factor already available, so that we will understand later. As of now, we can complete a table now. We can complete a table now. Flow between parallel plates. This is the velocity profile. This is the maximum velocity formula. Average velocity is U max upon 1.5. Tau general relation is this. Tau max, 3 formulas, 2 mu U average divided by mu, 3 mu U max upon B, 2 mu U average U max divided by B, 3 mu U average divided by B, and minus B dP by dx. The Fanning's friction factor or coefficient of friction is 12 upon Baba. Baba किसकी बेसिस पर डिफाइन किए गए हैं? बाबा डिफाइन किए गए हैं दोनों प्लेट्स के बीच के टोटल गैप की बेसिस पर. Baba has been defined on the basis of total gap between both the plates. Total gap between both the plates. Darcy's, this one is known as
This one is known as coefficient of This one is known as coefficient of friction. This one is known as Fanning's friction factor. This one is known as Fanning's friction factor. And F is known as Darcy's friction factor. दोनों में बस अंतर इतना है कि Darcy's friction factor Fanning's friction factor का 4 गुना है. Darcy's friction factor is 4 times the Fanning's friction factor. And then of course, we move on to the next case where प्लेट की मोशन के कारण फ्लूइड को वेलोसिटी दी जाए. फिर से वही प्रोसीजर, कंटिन्यूटी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू 0. यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स. नेवियर-स्टोक्स. अब मोशन प्रेशर ग्रेडियंट के कारण नहीं, अब मोशन अपर प्लेट को मूव करा के दी जा रही है और इसलिए दोस्तों प्रेशर ग्रेडियंट 0 हो गया. एंड क्योंकि u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया. ग्रेविटी फोर्सेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है और क्योंकि हमारे पास है सेम कहानी, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया. अब हमारे पास बचा सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0 मतलब d ऑफ du बाई dy इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा du बाई dy इज इक्वल टू a, du इज इक्वल टू a dy, u इज इक्वल टू ay प्लस b. अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण करवाया गया हो और दोनों पैरेलल प्लेट्स स्टेशनरी हो तो पैराबोलिक वेरिएशन होगा वेलोसिटी का किसी एक गिवन सेक्शन पर मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक पैराबोलिक वेरिएशन. लेकिन अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, एक प्लेट को मूव करा के फ्लो कराया गया हो तो कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशंस कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी का एक गिवन सेक्शन पर वेरिएशन लीनियर होगा. इफ द flow between two parallel stationary plates is being driven by the pressure difference, then continuity and momentum gave us that velocity at one given section will be parabolic function of y. But if the motion is being driven by moving one plate, not by pressure gradient, then velocity will be a linearly varying. Now you understand why in chapter 1, when one plate is moving and one plate is stationary, for a Newtonian fluid, why always we assume a linear velocity profile. अभी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अरे यार चैप्टर नंबर 1 में जब हम विस्कोसिटी वाले प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो विस्कोसिटी वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग हमेशा लीनियर मानते हैं. इसलिए मानते हैं क्योंकि मानते नहीं है, सच है. इट इज नॉट assumption. Linear velocity profile is a truth for laminar flow when one plate is stationary, another plate is moving. बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे और अल्टीमेटली ये ऐसा दिखने लगेगा. इफ आई यूज बाउंड्री कंडीशंस अल्टीमेटली इट विल लुक लाइक दिस. ध्यान से समझियो. फिर से बता दूं कि ये वाली भी हमने मिडिल पर ही ओरिजिन मानकर और दोनों प्लेट्स के बीच का गैप 2b मानकर डिराइव किया है. हालांकि पहले जैसी सिमेट्री यहां नहीं अवेलेबल थी तब भी. Even this one we have derived by assuming the gap between both the plates as 2b and assuming origin at the midpoints. In this case, there is no symmetry available as was available in previous case. So why, if there is no symmetry, why are we not doing simply by taking, actually it will become simple if in this case we take origin at bottom and if we take the whole gap as capital B. बिलीव मी, आसान हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन फिर आपको सीधे सीधे y इज इक्वल टू mx फॉर्म में मिल जाएगी.
मिडिल पर ओरिजिन मान रहे हैं तो वहां से स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट मिल रहा है. इफ आई अस्यूम the origin at one of the plates, if I assume origin at one of the plates, then the velocity profile will pass through the origin, and therefore we will be able to express the whole velocity profile as a in the format of y is equal to mx. By assuming the ध्यान से समझिए, by assuming origin at middle point, it's not passing through origin, and therefore it becomes the format of y is equal to mx plus c. It becomes the format of y is equal to mx plus c. So why are we doing this complicated thing? Because ध्यान से समझियो, because sometimes the flow between two parallel plates will be driven by both, by moving one plate and by having the pressure difference as well. And then if we had done the analysis in a similar manner, all we would need is to superimpose both the velocities. अरे भाई साहब, समझो इस कहानी को कि क्यों हमने ये कॉम्प्लिकेटेड रास्ता चुना. ये कॉम्प्लिकेटेड रास्ता हमने इसलिए चुना, this complicated way we have selected, so that, my dear friends, just in case, by the way, let me complete this story, so that just in case if the flow is being caused by not only moving one plate but also by creating some pressure difference, then we will be able to write the whole velocity as minus b square by 2 mu dp by dx 1 minus y square by b square plus up by 2 1 plus y by b. एक बार हमने प्लेट्स को स्टेशनरी मान लिया और प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो की एनालिसिस की. एक बार हमने प्रेशर डिफरेंस को एब्सेंट मान लिया और प्लेट की मोशन के कारण पूरी स्टडी की. अब अगर दोनों प्रेजेंट हो तो लिख देना. अगर दोनों प्रेजेंट हो तो लिख देना that u is equal to up by 2 1 plus y by b, and then minus b square by 2 mu dp by dx 1 minus y square upon b square. Then you should write something like this. So that's why we have done this, so that we will be able to superimpose each and everything. फिर तो आगे की कहानी आपको पता ही है कि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. लीनियर है तो एवरेज हाफ ही होगा. Then you can calculate the average velocity by equating with actual discharge. You can calculate the average velocity. Then you can use the Newton's law of viscosity, so that you will have that shear stress will remain constant. Then friction force on the plate is shear stress on the plate multiplied by area. Shear stress is mu into up by 2 divided by b, and area, my dear friends, रो इंट्रोड्यूस किया, 2 इंट्रोड्यूस किया, यू एवरेज इंट्रोड्यूस किया, रो इंटू 2b इंटू यू एवरेज अपॉन म्यू, रो इंटू 2b इंटू यू एवरेज अपॉन म्यू. आई टेक to the lower side, and all other things are kept in the numerator. Then I'm going to have 4 into half rho u average square into area, 4 into half rho u average square into area, and rho u average to be divided by mu. I take that half rho u average square into area to this side. Then I get the friction coefficient is a function of 1 upon baba. फ्लो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण क्रिएट किया गया हो, या एक प्लेट को मूव करके क्रिएट किया गया हो. फ्लो दो प्लेट्स के बीच से हो रहा हो, या एक सिलेंडर या स्फेरिकल बॉडी के ऊपर से हो रहा हो. एक बात जो कभी झूठ नहीं होगी वो ये, दैट ड्रैग कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 1 upon Reynolds number. Whether the flow is being created by the pressure difference or the flow is being created by moving one plate, whether the flow is happening inside
two parallel plates or inside a cylindrical pipe, or the flow is happening over and above an automobile body, automobile vehicle's body, one thing that's always going to hold is that the coefficient of friction is a function of 1 upon Reynolds number. 1 upon Reynolds number. Similarly, Darcy's friction factor is there. Table update कर दी जाए. Table update कर दी जाए. इसमें ये बता दूं मैं कि यहां पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करवाई होंगी जिसमें मैंने सुपर इम्पोज किया है. Where I have superimposed both the effects. Plate is also moving and pressure gradient is also present. By the way, अगर प्लेट मूव हो रही है तो पॉजिटिव या ऑपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट भी प्रेजेंट हो सकता है. अगर प्लेट के पास एनफ मोशन है तो ऑपोजिट प्रेशर डिफरेंस को भी खींच ले जाएगा वो. हाँ, ऑफ कोर्स उस केस में वेलोसिटी थोड़ी वियर्ड हो जाएगी. अगर प्लेट की मोशन के कारण वेलोसिटी हो रही है और फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट या नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है तो दोनों ऐड होकर ऐसा पैराबोला क्रिएट करेंगे. देन दे विल गेट एडेड एंड दे विल क्रिएट अ पैराबोला. दे विल क्रिएट अ पैराबोला लाइक दिस, an asymmetric parabola like this. If there is motion produced by plate motion and also by pressure gradient, u is equal to up by 2 1 plus y by b, where b is the half of the gap, and u is equal to minus b square by 2 mu dp by dx 1 minus y square by b square. Then by superimposing both of them, we will get an asymmetric parabola like this. But if there is an opposite pressure gradient or positive pressure gradient, मतलब pressure बढ़ रहा हो तो naturally pressure gradient will cause a backward flow. If there is an opposite pressure gradient, means the pressure is increasing, then there will be an opposite pressure force. So तब आप अगर superimpose करोगे इन दोनों को तो आपको ऐसा पैराबोला दिखेगा. और अगर प्रेशर ग्रेडियंट ऑपोजिट है और बहुत ज्यादा हावी हो गया तो लोअर प्लेट के आसपास इवन थोड़ा सा बैक फ्लो भी मिल सकता है आपको. नियर द लोअर प्लेट यू कैन इवन गेट लिटिल बिट ऑफ बैकवर्ड फ्लो if the pressure gradient becomes too much, opposite pressure gradient and too much. लेकिन आपको ये सब रटना नहीं है. आप तो सिंपली सब कुछ सुपर इम्पोज करके खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि कहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा पैराबोला का शेप कैसा है. You don't have to mug up so many cases that sir plate velocity also present and there is negative pressure gradient also present. There is a favorable pressure gradient which is driving the flow in forward direction. So I will have to remember this as one case and then I will have to remember this as another case. No, you don't have to remember anything, guys. You just have to superimpose the velocity and then फाइनल एक्सप्रेशन को जब आप डिफरेंशिएट करके जीरो इक्वेट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा कहां पर है. With respect to origin, where exactly the maxima is available, that you will know, and that will give you an idea about the shape of the parabolic profile. Table complete की जाए. Flow between two parallel stationary plates with a gap 2b between them caused by pressure differences. We get parabolic velocity profile where u max is a function of how much pressure difference is present. Average velocity, which is a constant hypothetical velocity to give you equivalent discharge, is u max divided by 1.5. Newton's law of viscosity gives you tau as a function of y, in which y, if I put plus minus b,
then I get the maximum shear stress present at the lower plate and upper plate. If I use this tau wall value and multiply it with the area to calculate total friction effect, then I ultimately get friction effect upon half rho v square into area of the plate is equal to 12 divided by Baba. Darcy's friction factor will be 48 divided by Re, and Reynolds number is defined on the basis of total gap between both the plates. Reynolds number defined है दोनों प्लेट्स के बीच के टोटल गैप की बेसिस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दो पैरेलल स्टेशनरी प्लेट्स जिनके बीच का गैप 2b है, अगर मोशन अपर प्लेट के कारण हो तो एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, एंड ये लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है टॉप पर, maximum is present at the top. Average velocity will be average, simply means no average of 0 and maximum, since it is a linear variation. And then I use Newton's law of viscosity in this. Tau is equal to mu du by dy. I get in this case shear stress will remain constant. इस केस में shear stress constant रहेगा. Constant रहेगा तो प्लेट के ऊपर भी उसकी वही वैल्यू रहेगी. On the plate also we will have the same value. Then उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी 4 अपॉन Re, Darcy's friction factor will be 16 upon Re, and needless to say once again that Baba is defined on the basis of total gap. Baba को total gap की बेसिस पर डिफाइन किया गया है. हाँ, जब एक प्लेट मूविंग हो तो उसे हम काउटी फ्लो कहते हैं. काउटी फ्लो विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब सिर्फ प्लेट की मोशन के कारण. काउटी प्लेट फ्लो विद प्रेशर ग्रेडियंट मतलब दोनों को सुपर इम्पोज करोगे. Couty flow, when one plate is stationary, another plate is moving, we call it Couty flow. C-O-U-E-T-T-E. Couty flow. We call it Couty flow. C-O-U-E-T-T-E. Couty flow. Okay. So we call it Couty flow, and Couty flow, any flow where one plate is stationary, another plate is moving, two parallel plates in which one plate is stationary, another is moving. We call it Couty flow. Couty flow, my dear friends, may be present with zero pressure gradient. That means the motion is caused by moving one plate only. Then we call it Couty flow with zero pressure gradient. But Couty flow with pressure difference also causing the flow, then we will need to express total velocity as u is equal to up by 2 in bracket 1 plus y by b plus minus b square by 2 mu 1 minus y square by b square. तो लीनियर और पैराबोलिक दोनों को सुपरम इम्पोजम करोती. We superimpose both of them together. Both effects are simultaneously present. We get the velocity profile like this. Ahaha, ohoho, ahaha, ohoho. Continuity और momentum मिलकर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को वैसे ही नचाते हैं जैसे कंपैटिबिलिटी और इक्विलिब्रियम मिलकर पूरे सोम को नचाते हैं. Just like compatibility and equilibrium is the killer combination for entire subject of strength of materials or mechanics of solids, similarly the combination of continuity and momentum is the killer combination for entire subject of fluid mechanics. So here you go once again in cylindrical polar coordinates. Continuity tells you that u is not a function of axial coordinate s. Continuity आपको बता रहा है कि u axial coordinate s का फंक्शन नहीं है. मैं उसको एक्सप्लेन करके नहीं दिखा रहा आपको. रेडियल वेलोसिटी नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि रेडियल वेलोसिटी प्रेजेंट होती तो फ्लूइड पाइप के रेडियल डायरेक्शन में बाहर जा रहा होता. तो रेडियल वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, एजीमुथल नहीं प्रेजेंट है, नहीं तो फ्लूइड पाइप में सर्कुलेट हो रहा होता एक जगह. तो यहां से हमें मिला डो वी आर बाई डो आर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स डो वी एस बाई डो एस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी एस यानी कि एक्सियल वेलोसिटी एक्सियल डायरेक्शन का ही फंक्शन नहीं है. एक्सियल वेलोसिटी is not a function of axial direction itself.
ये तो होना ही था, क्यों? क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड फ्लो की क्या निशानी? सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। एंड देन वी कम टू द मोमेंटम। मोमेंटम को रेडियल में यूज करेंगे तो मिलेगा प्रेशर फोर्स एक गिवन सेक्शन पर चेंज नहीं होगा, एक गिवन सेक्शन पर चेंज नहीं होगा। अल्टीमेटली तीसरे मोमेंटम इक्वेशन को यूज करते हुए और फिर सिंप्लीफाई करते 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 अल्टीमेटली वी गेट दिस वेलोसिटी प्रोफाइल दैट किसी एक गिवन सेक्शन पर वेलोसिटी आर का फंक्शन होगा स्मॉल आर, जो कि जीरो सेंटर पर जिसकी वैल्यू जीरो है, और पाइप के सरफेस तक जाते जाते जिसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल आर। मेरे प्यारे दोस्तों, वेलोसिटी उस स्मॉल आर वेरिएबल का पैराबोलिक फंक्शन होगा। वेलोसिटी इज अ पैराबोलिक फंक्शन ऑफ दैट स्मॉल आर पैरामीटर, दैट स्मॉल आर parameter, and that parabolic function looks like this. After that, you know, it's the same thing that अगर पूरे एरिया पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी प्रेजेंट होती या फिर ये वेरिएबल वेलोसिटी एक छोटू एरिया पर प्रेजेंट है 2 पाई आर डी आर, डिस्चार्ज हुआ सेम मिलना चाहिए। We should get the same discharge whether we have the whether we imagine a constant hypothetical velocity present at entire area, or we imagine this variable velocity present at the ring type of area 2 pi r dr. Then my dear friends, we get the relation between average velocity and maximum velocity as u average is equal to u max divided by 2. Newton's law of viscosity apply करेंगे. Once we apply the Newton's law of viscosity, we get shear stress is linear function of R. But this linear function is an axisymmetric linear function. Axisymmetric मतलब इसको आप 360 degrees में ये linear functions को imagine कर सकते हो. This linear thing you can imagine in 360 degrees, 360 degrees, 360 degrees. This linear thing we can imagine in 360 degrees. You can imagine along a vertical radial line also. You can imagine along a horizontal radial line also. You can imagine along an inclined radial line also. आप एक inclined radial line के along भी imagine कर सकते हो, आप एक horizontal radial line के along भी imagine कर सकते हो, और एक vertical radial line के along भी imagine कर सकते हो। Naturally ये R के साथ बढ़ रही है shear stress. The shear stress is becoming more and more and more with R. So wall पर जाकर maximum होगी, वो maximum value हमें ऐसी कुछ मिल गई। Then Umax को average के terms में express कर दिया, और ultimately Umax itself is R square by 4 mu dP star by ds. So wall shear stress को हम pressure difference के terms में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो प्रेशर डिफरेंस जो हमने सर्टेन लेंथ पर अप्लाई किया हुआ है। द प्रेशर डिफरेंस दैट वी हैव अप्लाइड ऑन टू सर्टेन लेंथ, in terms of that pressure difference also we can express the shear stress present at the surface. surface पर जो shear stress present है उसे wall shear के terms में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड अब जबकि हमें वॉल शियर स्ट्रेस मालूम है, क्या हम पाइप की दीवार पर फ्लूइड के फ्रिक्शनल इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड on the pipe, please? Can we calculate the effect of frictional effect of the fluid? Yes, the wall shear stress multiplied with the surface area of the inner side of the pipe, and the surface area of inner side of the pipe is 2 pi r l. My dear friends, we have just found the wall shear stress as 4 mu u average divided by capital R, 4 mu u average divided by capital R, and then we have 2 pi r l. R ने R को मार दिया या नहीं मारने दो, डेंसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। we will introduce density, we will introduce u average, we will introduce
2 here, and then this 2 will become 4, and we will take this mu to the denominator. Then I'm going to get 4 into 4 becoming 16, 4 into 4 becoming 16, and then pi into r is present, and a pi into r into L is present. And then we have U average square present and rho present. U average square present and rho present. Rho and U average square present. My dear friends, here we have rho into U average. Rho into U average into 2R becomes the dia of the pipe. The dia of the pipe, and mu has been taken from the numerator. सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बाबा को एक बार फिर से नमस्कार करें. बाबा को सभी लोग प्रणाम करें. अगर मैं इसे 2 पाई RL लिख दूं, देन हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकता हूं. 16 into 2 pi RL into half rho U average square upon Baba defined on the basis of diameter of the pipe. Baba defined on the basis of diameter of the pipe. I get friction force upon half rho U average square into pi dl, which is the surface area, is equal to 16 upon Baba defined on the basis of diameter of the pipe. बाबा प्रकट हुए, और बाबा प्रकट हुए तो भाई साहब क्या ही तो बात है. आहा, ओहो, आहा, क्या ही तो बात है. इस मैराथन रिवीजन सेशन में भी एक एक बात लॉजिक के साथ समझ में आए आपको, और ब्यूटीफुली समराइज भी हो जाएं चीजें. ऐसा जहां हो वो अनमैचेबल. It's a marathon revision session. It's a super fast revision session, and there also you develop, you evolve, you understand things with logic, each and everything. My dear friends, that's what you call unmatchable. So in case of pipe flow also, now I know velocity is changing parabolically. Now I know maximum velocity is a function of pressure difference. Now I know that maximum velocity, average velocity, and maximum velocity have a relation. Now I know that shear stress is changing linearly. Shear stress becomes maximum at the surface of the pipe, and it has 3 alternative expressions. Coefficient of friction is 16 divided by Reynolds number. Darcy's friction factor will become 4 times. Reynolds number is defined on the basis of diameter of the pipe. On the basis of diameter of the pipe. So, and by the way, this is one very important thing, that इसमें एक रिलेशन ऐसी है, वैसे बाकी सारी एनालिसिस हमने लैमिनार के लिए की है, लेकिन एक रिलेशन ऐसी है जो प्रूव किया जा सकता है लैमिनार के साथ साथ टर्बुलेंट में भी वैलिड होगी. Otherwise, this whole analysis has been done only and only for laminar. But there is one relation that can be proved to be valid even for turbulence. लेकिन सर हमने लैमिनार मान के किया है. कई बार होता यह है कि मंजिल तो वही है, बस आप लैमिनार के रास्ते पर से वहां पहुंचे, टर्बुलेंट के रास्ते जाते तो भी वहां पहुंचते. एंड वो रिलेशन कौन सी है? वो रिलेशन है शियर स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन. That relation is this one. That relation is this one. This last relation is valid for laminar as well as turbulent. उसे मैंने यहां प्रूव करके दिखाया है कि देखो, मैं एक जनरल, वैसे मैंने लैमिनार के लिए किया, for laminar only, 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 for laminar only. We have done things for laminar only, but incidentally, this final relation is valid for even turbulent flow, because I can follow a general equilibrium principle to prove it. दोस्तों,
वैसे हमने वेलोसिटी प्रोफाइल जो लैमिनार के लिए वैलिड है उसको डिफरेंशिएट किया, लैमिनार के लिए वैलिड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज किया क्योंकि वो वेलोसिटी प्रोफाइल ही लैमिनार के लिए है, तो सारे स्टेप्स में फिर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया कि क्योंकि आप ये वेलोसिटी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, आगे जो कुछ भी मिलेगा लैमिनार के लिए होगा। बट इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हुए ऐसा प्रूव किया जा सकता है दैट टाउ wall is equal to minus b dp by dx is actually a general relation and it is valid for both laminar and turbulent flow. And बस यहीं से तो किस्मत बदल गई, किस्मत बदलती देखिए। हाँ, यहीं से किस्मत बदल गई कि अब क्योंकि वो रिलेशन लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए वैलिड है, तो हम लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों की एनालिसिस कर सकते हैं। लैमिनार की इंटरनल डिटेल्स हमें पता है, वेलोसिटी प्रोफाइल से लेकर मैक्सिमम वेलोसिटी से लेकर एक एक लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस, एवरेज वेलोसिटी। टर्बुलेंट की इंटरनल डिटेल्स नहीं पता, बट एक फाइनल रिलेशन जो लैमिनार के लिए प्रेशर डिफरेंस और वॉल पर डेवलप होने वाले, सरफेस पर डेवलप होने वाले शियर स्ट्रेस को रिलेट करता है, वो लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए सिमिलर है, और वो हमें बाहर बाहर से टर्बुलेंट की एनालिसिस करने का मौका देगा। लैमिनार, we know the internal details, we know at what layer what will be the velocity, and we know what is the average velocity, and we know at what layer what will be the velocity value, and we know at what layer what will be the shear stress value. We know what is the average velocity and how it is related with maximum velocity. For turbulent, we don't know the internal details, but that one relation is valid, tau wall is equal to, that one relation is valid, tau wall is equal to minus b dp star by ds, and this relation we'll be using to do the analysis of even turbulent from at least outside, to at least calculate frictional losses and all. Turbulent की interior details में क्यों नहीं जा रहे सर आप? Why are you not going into the internal details of turbulent? क्योंकि डर लगता है। Turbulent, turbulenters. We will go into the interior details, but before we go into the interior details, please know that there is a critical Reynolds number that is around 2000, below which the flow remains disciplined. Above 4000, the flow becomes turbulent. This is for internal type of flow. ये सारी बातें इंटरनल के लिए हैं। सर मुझे ये नहीं समझ में आया कभी कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर इससे कम होगा तो लैमिनार होगा। देखो, इससे कम होगा तो लैमिनार होगा या इससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन कम होगा तो लैमिनार होगा, ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, इस बात को फिजिकली समझा जा सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच the behavior is layer to layer to layer to layer to layer and laminar, an exact value above which the mixing will become so much significant that we cannot treat the behavior as layer to layer to layer to layer behavior. So why, how this exact 4000 or exact 2300 is obtained, we don't know. I mean, we know experimentally, it is obtained experimentally, but I can tell you the physical significance of why Reynolds number less means discipline and why Reynolds number more means indiscipline. Reynolds number का कम होना क्यों डिसिप्लिन है और Reynolds number का बढ़ जाना क्यों indiscipline है? Let me help you understand why a small Reynolds number means there is a lot of discipline. A small Reynolds number means what? Small Reynolds number means rho VL by mu. Now, small Reynolds number means what? Small Reynolds number means either you have
velocity very small, or you have viscosity very high. If the velocity is very small, then fluid is crawling. And if the fluid is crawling, it will never become indisciplined. If the viscosity is very heavy, very high, then, my dear friends, the bonding between the layers will be so strong that they will never break the bond and go away. So they will follow strict layer to 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 layer pattern. If the bonding is so strong, they will follow the layer to layer to layer to layer to layer pattern. Now, why a high Reynolds number will mean indiscipline? Because high Reynolds number will mean that either the velocity is very high, or, my dear friends, the mu value is very, 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 very small. If the velocity is very high, then the fluid particles will go crazy. And if the viscosity is very small, then fluid particles don't have very strong bonds between them and they will again go crazy. एक ज्यादा वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा दैट बहुत ज्यादा वेलोसिटी है या बहुत कम विस्कोसिटी है. ज्यादा वेलोसिटी का मतलब भी हुआ फ्लूइड का पागल हो जाना, और विस्कोसिटी कम होगी तो बॉन्ड्स स्ट्रांग नहीं होंगे, उसका भी मतलब होगा फ्लूइड का पागल हो जाना. That will also mean that fluid has become mad. Fluid particles has gone crazy. And then ये सारे problems मिलने हैं आपको दोस्तों, सारे के सारे problems मिलने हैं आपको दोस्तों. All these problems you are going to get. ये table में पहले ही आपको explain कर चुका हूँ. This table I have explained multiple times. आते हैं दूसरे टॉपिक पर. दूसरा टॉपिक है पाइप फ्लो. फिर से एक बार, लेकिन इस बार हम पाइप फ्लो में लॉसेस एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे. नाउ वी विल ट्राई टू एस्टिमेट लॉसेस. मेजरली हर लेंथ के हर टुकड़े पर जो प्रेजेंट है वो है फ्रिक्शनल लॉस. लेंथ के हर टुकड़े पर जो प्रेजेंट है वो है फ्रिक्शनल लॉस. और क्योंकि as long as the flow is present, friction is present, therefore we call it major loss. दूसरे जो किसी एक सेक्शन पर होंगे, कहीं पाइप का एनलार्जमेंट हुआ, कहीं पाइप का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या कहीं पर कोई वाल्व लगा हुआ है, या कहीं पर फ्लूइड की एंट्री हुई, या कहीं से फ्लूइड की एग्जिट हुई, या बेंड हुआ, ऐसे एक सेक्शन पर प्रेजेंट लॉसेस को हम कहेंगे माइनर लॉसेस. फ्रिक्शन इज अ लॉस दैट इज प्रेजेंट as long as the flow is present, and therefore that we will call as major loss. But if there is all of a sudden at one section there is an enlargement, at one section there is a contraction, valve, exit, entry, bend, then ये once in a while present होंगे. These losses are present once in a while, एक जगह कहीं, तो इसलिए इनको हम minor losses कहने वाले हैं. We are going to call them minor losses. My dear friends, once again I have proved that this relation is valid for both laminar and turbulent. ये रिलेशन हमने इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए प्रूव की है कि भाई क्योंकि सेम कहानी है, क्योंकि सेम कहानी, एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स को हमने बैलेंस कर दिया. Acceleration is not present, the net force is not present, and if the net force we are balancing by balancing the pressure force and wall shear stress and gravity ka component, ultimately we get a relation like this, valid for both laminar as well as turbulent. इसमें ये ध्यान रखना, P स्टार का मतलब है टोटल स्टैटिक प्रेशर, मतलब स्टैटिक प्रेशर प्लस रो जी वाई. ग्रेविटी के इफेक्ट को P में ही एक्सप्रेस करके लिख दिया गया है.
The gravity effect has been written, expressed in terms of P only. My dear friends, now we apply the energy equation. लेकिन ये तो बर्नौलीज इक्वेशन है ना बर्नौलीज इक्वेशन तब होती जब ये HF ना लिखा हुआ रहता. Bernoulli's equation, it would have been if there was no HF written here. Now with HF written here, this is a general energy equation. Flow energy plus kinetic energy plus potential. Flow energy plus kinetic plus potential plus something has gone into losses. Something has gone into losses. So HF becomes equal to P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2. P1 by rho g plus Y1 minus P2 by rho g plus Y2 gives me P1 plus rho g Y1, P1 star, P2 plus rho g Y2, P2 star. P1 star minus P2 star divided by rho g. Now, so I now know that in case of pipe flow, laminar के केस में तो मुझे मालूम है Umax is minus R square by 4 mu delta P star by L. So delta P star will become 4 mu Umax L upon R square. This is for laminar fully developed flow. So if I put this delta P star value and I simplify, I will get this last two relations, 32 mu U average L upon rho g d square and 128 mu Q L upon pi rho g d power 4. 32 mu U average L upon rho g d square and 128 mu Q L upon pi rho g d power 4. Hagen-Poiseuille law कहते हैं इन्हें. These are known by the name Hagen-Poiseuille law. Hagen experimentally, Poiseuille theoretically. दोनों लोगों ने सेम लॉज दुनिया को दिए. हेगन साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, पॉइसौली ने अपने theoretical analysis के थ्रू. Hagen gives these laws to the world through his experiments. In fact, it was Hagen's experiment that created the wonder of and that created an unsolved regime of turbulent flow. Hagen साहब के experiments ही responsible हैं कि 100-200 साल तक एक अनसुलझी पहेली बने रहे turbulent flow. मतलब उनके एक्सपेरिमेंट्स के कारण अनसुलझी नहीं बने रहे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट्स करने से ही कहानी शुरू हुई. We will come to that. As of now, याद रखना कि हमने U max को रिप्लेस करा है, डेल्टा P स्टार को रिप्लेस करा है U max के टर्म्स में, और इसलिए ये पूरी कहानी, आगे की कहानी सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड है. This whole further story is valid only for laminar. So बहुत ही simple है. It's pretty simple. My dear friends, I have P1 plus rho g y1 plus kinetic head at 1, kinetic head at 1, and here I have P2 plus rho g y2, P2 plus rho g y2 upon rho g plus kinetic head at 2, So I get P1 star, same kahani, therefore kinetic head cancels. P1 star by rho g is equal to P2 star by rho g plus some head loss due to friction. I get HF is equal to minus delta P star upon rho g. Now delta P star, I already know Umax value in case of laminar fully developed flow. In case of laminar fully developed flow, I know minus R square by 4 mu dP by dx. So now put that dP value 4 mu Umax L upon R square. 4 mu Umax L upon R square. माइनस ने माइनस को प्लस बना दिया. Umax 2 times U average. Umax is 2 times U average, and R can be written as D square by 4. So ultimately this 4 and 2 becomes
32, and then mu is there, u average is there, L is there, and of course rho g यहां से मैं मिस कर गया था, तो rho g d square. Now this is, अगर इसको डिस्चार्ज के टर्म्स में बदल दोगे ये बन जाएगा. लेकिन याद रखना, हेगन साहब ने कहा कि मुझे पता चल गया है कि पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डिस्चार्ज पावर 1 पे डिपेंड करेगा. समस्या उनको तब हुई जब उन्होंने ज्यादा वेलोसिटी पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, तो उन्हें पता चला कि फ्रिक्शनल पावर लॉसेस डिस्चार्ज पावर लॉस फ्रिक्शन के कारण होने वाले पावर लॉसेस डिस्चार्ज पावर 1.75 पर डिपेंड कर रहे हैं, और उनसे लेकर 200 साल तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका ऐसा क्यों. और वहां प्रेंटल साहब आए, और प्रेंटल साहब ने दुनिया को करके दिखाया कि लो मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ. I repeat once again that this is something we have done theoretically, that power loss due to friction, energy loss due to friction is proportional to discharge power 1, and this is valid from here onwards. It is valid only for laminar. My dear friends, Hagen actually did it experimentally. Poiseuille actually did it theoretically. You do something experimentally and you can justify it theoretically, and then you are like, wow. You are like, wow, so beautiful, so elegant, just looking like wow. So Hagen साहब ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किया, पॉइसुल्ली साहब ने theoretically प्रूव किया, और दोनों दुनियाओं से मुहर लग गई कि फ्रिक्शन के कारण होने वाले पावर लॉसेस, फ्रिक्शन के कारण होने वाले एनर्जी लॉसेस डिस्चार्ज पावर 1 पे डिपेंड करेंगे. The power losses due to friction, the energy losses due to friction will depend upon discharge power 1. But my dear friends, Hagen साहब के एक्सपेरिमेंट्स में ये भी जानने को मिला कि हाई वेलोसिटी पर frictional power losses depend upon discharge power 1.75. Why? Nobody could explain till Prandtl came into the picture in around 1905, 1905 के आसपास. उस कहानी पे जाएंगे, पहले इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं. That we have Hagen-Poiseuille law. This is called HP law. This is called HP law. Now I introduce U average and U average. If I introduce U average, I will have rho into U average into D divided by mu. Rho into U average into D divided by mu. Rho into U average into D divided by mu. I will have 1 extra D. I will have 1 extra G. I will have 32. I will have U average becoming U average square. I will have L here. So this 32, this 30, denominator 32 will become 64 U average square into L, and rho U average D by mu. Baba prakat हुए 64 divided by Baba L by D and U average square by 2G. Arey Baba prakat हुए. So I get Darcy's friction factor L by D U average square by 2G. This is called Darcy-Weisbach equation. अब मजे की बात, सब कुछ हमने लैमिनार के लिए किया, और सब कुछ लैमिनार के लिए किया, तो हेगन-पॉइसुल्ली लॉ सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड होना चाहिए, पाइप फ्लो का लैमिनार का केस, और उसी को फर्दर सिंप्लीफाई करते करते यहां तक पहुंचे. तो ये जो डार्सी-वीसबैक इक्वेशन है, ये भी लैमिनार के लिए वैलिड होनी चाहिए. This was done for laminar. So Hagen-Poiseuille law must be valid for laminar only. And only that we have simplified further and further to reach here. So naturally, Darcy-Weisbach equation must also be a equation valid for laminar alone. Interestingly, Darcy-Weisbach is valid even for turbulence. क्योंकि हमने देखा है, ये है, प्रोफेसर पूछ रहे हैं what about the loss of pressure due to friction, and then Palermo is saying the Darcy-Weisbach equation, we got it down to the millimeter.
मनी हाइस्ट का एक फेमस सीन है। मैं मनी हाइस्ट देख रहा था ना, अचानक से प्रोफेसर इज आस्किंग व्हाट अबाउट द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन in money heist. Last season they are driving those gold nuggets through pump, tunnel. Back equation, we got it down to the millimeters. Now look at the details. Wow, money heist में ये बेहतरीन, जैसे ही मेरे सामने आया ये, आई वॉज क्रेजी, आई वॉज मैड। आई इमीडिएटली टुक द स्क्रीनशॉट, और वो दोनों ही स्क्रीनशॉट्स, दोनों सीन के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ये तो इन्वर्जन करने के कारण थोड़े अजीब से लगने लग गए हैं दोनों लोग, बट यू कैन फिगर आउट दिस इज नथिंग बट प्रोफेसर एंड ही इज Palermo. So Higgins-Poisson law, 128 mu QL upon pi rho g d power 4, and Darcy-Weisbach equation FL by D U average square by 2g. मजे की बात ये है दोस्तों that ये सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड है, लेकिन इसी को चेंज करते करते हम यहां तक पहुंचे, और ये Darcy-Weisbach equation लैमिनार के लिए भी वैलिड है। This Darcy-Weisbach equation is valid for laminar as well, valid for turbulent as well. Okay, so we once again have proved कि look, frictional power loss is equal to total pressure loss upon rho g, and then Umax हमें मालूम है minus r square by 4 mu delta p star by L for laminar. So I substitute delta p star as Umax, then Umax is changed as U average. This relation is again for laminar only. I simplify, I ultimately get 128 mu q L upon pi rho g d power 4. Higgins-Poisson law valid for laminar only. अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो हम पहुंचते हैं, अगेन आपने यूज किया है CF by is equal to 16 by RE, जो सिर्फ लैमिनार के लिए है। तो भाई साहब एक नहीं, आप तीन रिलेशंस यूज कर रहे जो सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड हो, और इसलिए ऐसा लगता है Darcy-Weisbach equation is valid for laminar only. But here we go. We know that tau wall is equal to R delta P star by 2L is valid for both laminar and turbulent. So delta P star is equal to 2 tau wall L upon R, 2 tau wall L upon R divided by rho g, and then I write R as d by 2 and introduce U average square and U average square. अब हम यहां पर tau wall को और हाफ को और रो को और U average स्क्वायर को अलग करेंगे, इस L को और इस D को भी अलग करेंगे, इस U एवरेज स्क्वायर अपॉन G को अलग करेंगे। ये क्या है? ये CF की डेफिनेशन है। F अपॉन A को बस टाउ लिख दो, तो ये CF की डेफिनेशन है। It is actually the definition of CF. And then there is, I'm introducing one extra 2, so this becomes 4. I get 4 CF L by D U average square by 2G. और चश्मा लगाकर ढूंढो, टॉर्च जलाकर ढूंढो, लैंप इग्नाइट करके ढूंढो, माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढो, और ढूंढो जो ढूंढ सको, कहीं एक भी ऐसी रिलेशन हमने यूज की हो जो सिर्फ लैमिनार के लिए वैलिड हो। सर्च as much as you can,
we have not used a single relation that is valid for laminar only. Darcy-Weisbach equation is valid for turbulent as well. Darcy-Weisbach equation is valid for turbulent as well. So ये याद रखना दोस्तों, that Darcy-Weisbach equation turbulent के लिए भी valid है. Darcy-Weisbach equation is valid for turbulent as well, and that's a great news. क्यों? क्योंकि turbulent से डर लगता है, और turbulent से डर लगता है तो टर्बुलेंट के अंदर जाए बिना टर्बुलेंट की वेलोसिटी प्रोफाइल, एक एक लेयर पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, एवरेज और मैक्सिमम में रिलेशन क्या होगा, ये सब जाने बिना हम जान चुके हैं पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इवन फॉर टर्बुलेंस. So that's a great news actually. Because without knowing the interior details of turbulent flow, that what will be the velocity at any given layer, what will be the shear stress at any given layer, what will be the average velocity and maximum velocity relation. Now we know that frictional power loss, even in case of turbulent flow, will be this. But there is a bad news. But there is a bad news. And the bad news is friction factor you know only for laminar. For turbulent, what will be the friction factor? I only know that it will be inversely proportional to Reynolds number. More than that, I don't know. As of now, we have only experimental way to do that. Experimental way to do that is done by Moody. मूडी बड़े मूडी इतने मूडी कि मूडी ने रेनॉल्ड्स नंबर की सारी वैल्यूज के लिए, मूडी इतने मूडी कि मूडी ने रेनॉल्ड्स नंबर की सारी वैल्यूज के लिए, और पाइप की एवरेज रफनेस, रिलेटिव रफनेस अपॉन डायमीटर ऑफ द पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर डाली. मूडी इतने मूडी कि मूडी ने रेनॉल्ड्स नंबर की सारी वैल्यूज, मूडी इज सो मूडी दैट मूडी for all the values of Reynolds number, and in case of turbulent actually friction factor also depends on roughness of the pipe. So and for various possible values of average roughness height, if I divide by D, that dimensionless parameter is known by the name relative roughness factor. So Reynolds number and relative roughness दोनों की different values के लिए मूडी ने फ्रिक्शन फैक्टर डिटरमाइन कर डाला, और ऐसा एक बड़ा सा चार्ट. इसमें आप दो स्पेशल केसेस देखोगे. एक यहां पर लिखा हुआ है स्मूथ सबसे नीचे वाले कर्व पे, और एक डैश्ड कर्व है जिसपे लिखा हुआ है होली टर्बुलेंट फ्लो. अगर स्मूथ का केस है तो फिर आपको रफनेस देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रेनॉल्ड्स नंबर से फ्रिक्शन फैक्टर, 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 रेनॉल्ड्स नंबर से फ्रिक्शन फैक्टर उठाएंगे. अगर होली टर्बुलेंट फ्लो है तो फिर रेनॉल्ड्स नंबर देखने की जरूरत नहीं है. रफनेस इतनी ज्यादा रोल प्ले कर रही है, रफनेस इज प्लेइंग सच अ बिग रोल दैट मॉलिक्यूल्स कम हियर, strike the roughness and then create a lot of turbulence. Molecules come here, strike the roughness and then create a lot of turbulence. उस रफनेस की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मॉलिक्यूल्स रफनेस से टकराकर सब तरफ उधम मचा रहे हैं. मॉलिक्यूल्स रफनेस से टकराते हैं और इधर उधर भागते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं. दूसरे मॉलिक्यूल्स तीसरे ने चौथे ने पांचवें ने छठे. धक्का क्यों मार रहा है बे?
and then there is a chaos going on. There is a lot of mixing going on. There is a lot of fight going on between the molecules. Then Reynolds number, उस इस extreme case में Reynolds number ही पहली बार ऐसा होता है कि बाबा पे नहीं डिपेंड करती चीजें. That's the extreme case where things become independent of Baba. Then things become only on roughness, relative roughness value. And then आप सीधे सीधे relative roughness अगर आपको 0.01 दिया है तो यहां जाओगे और यहां जाकर इस वाले कर्व पे जाकर सीधे इस एक्सिस पर चले जाओगे. So you will know that okay, the friction factor is 0.03 and 04, 0.039 or 0.038. इतने मूडी कि उन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर की मल्टीपल वैल्यूज और रिलेटिव रफनेस की मल्टीपल वैल्यूज के लिए. अच्छा सर, आपने एक्सट्रीम केसेस तो बता दिए, स्मूथ होगा और रफ होगा तब कैसे काम करता है ये. लेकिन अगर मान लो होली टर्बुलेंट ना हो और स्मूथ भी ना हो, सबसे नीचे वाला लाइन स्मूथ के लिए है जहां एक रेनॉल्ड्स नंबर पे एक फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, रेनॉल्ड्स नंबर डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, Reynolds number, Darcy's friction factor, Reynolds number, Darcy's friction factor, Reynolds number, Darcy's friction factor. Wholly turbulent, you don't look at the horizontal axis. सीधे जो भी रफनेस है 0.03 है, सीधे चले आए इस कर्व पर, एंड इस कर्व से फिर सीधे चले आए यहां. डिक्लेयर दैट द फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.06. अगर मान लो होली टर्बुलेंट ना हो, that means friction factor will be a function of Reynolds number also and relative roughness factor also. Relative roughness factor also. Then how would you read these experimentally determined values? Then suppose the Reynolds number is 2 lakhs. If the Reynolds number is 2 into 10 power 6, sorry, 20 lakhs. Suppose Reynolds number is 20 lakhs. And suppose roughness value is, चलो यहां आते हैं. Suppose Reynolds number is 10,000 and suppose roughness value is 0.01. So ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहां 10 power 4 लिखा हुआ है. So Reynolds number is 10,000 and suppose roughness value is 0.01. So आप 0.01 वाले रफनेस कर्व तक जब तक ना पहुंच जाओ तब तक आप ऊपर जाते रहोगे. Unless you reach to 0.01 curve, you will keep moving up. वहां पर आपको रुकना होगा एंड वहां से लेफ्ट आना होगा. ओहो, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू 10,000 एंड सरफेस रफनेस रिलेटिव रफनेस फैक्टर 0.01. करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.045. करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फैक्टर है 0.045. So now we know that Hagen-Poiseuille law is valid only for laminar, but Darcy-Weisbach equation is valid for laminar turbulent both, in which friction factor will be 64 by Reynolds number if it is laminar, but if it is laminar, then you know the theoretical way of determining the friction factor, but for turbulence, if only you knew the velocity, you would have differentiated the velocity to get tau, and then you would have known the tau wall, and then you'd have determined the Darcy's friction factor as a function of Reynolds number. But Moody ने क्या किया? Moody ने एक experimental setup prepare किया. Experimental setup prepare करके friction factor is inversely proportional to Reynolds number plot कर लिया. Friction factor is inversely proportional to Reynolds number plot कर लिया. He plotted all those values. And उसके बाद problem भकाभक.
प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भका भक, minor losses, minor losses, minor losses. Coming to the minor losses, saying it once again, Darcy is back. Laminar हो तब भी यूज करो, turbulent हो तब भी यूज करो. Whether it is laminar or it is turbulent, use Darcy is back. बस हाँ, friction factor laminar के लिए तो मालूम है, turbulent के लिए given होना चाहिए. Friction factor value is 64 by RE if it is laminar. Friction factor is 64 by RE if it is laminar pipe flow, and if it is turbulent pipe flow, then friction factor is either obtained by Moody or obtained by Colebrook equation. Colebrook equation रटना नहीं है, बस नाम याद रख लेना है. Colebrook equation रटना नहीं है, बस नाम याद रख लेना है कि भाई Colebrook equation Moody's चार्ट का ही इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्जन है. 1/√f is equal to minus 2 log base 10 relative roughness upon 3.7 plus 2.51 Reynolds number √f. Reynolds number √f. Cool. So बस ये कोलब्रुक इक्वेशन आपको रटनी नहीं है, आपको ये याद रख लेना है कि कोलब्रुक इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, मूडीज चार्ट भी यूज कर सकते हैं. फॉर टर्बुलेंट फ्लो we can use either of them. We can use either of them. चलो, अब आते हैं, मेजर लॉस तो हो गया, अब आते हैं माइनर लॉसेस पर. माइनर लॉसेस डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, सीधे बात करेंगे कि जैसे हमने फ्रिक्शनल लॉस लिखा है, फ्रिक्शनल लॉस लिखा है, just the way we have written frictional loss is depending upon some flow parameters, some geometrical parameters, and the kinetic head of the flow defined on the basis of average velocity. वैसे ही अगर देखो ये फ्रिक्शन के लिए, वैसे ही enlargement के केस में भी it will depend upon kinetic head defined on the basis of average velocity. Exit is just a special case of enlargement when A1 becomes much less, so it becomes 0 here, and I get 1 value. Then there is a contraction ka case. Contraction will be A2 divided by AC, I mean some geometric parameters and kinetic head. Then there will be entry losses ka case. In case of entry losses, we are going to have once again U average square by 2G into 0.5. Bend losses के केस में depending upon bend का angle क्या है, ये KL की value given होगी. So basically you are always going to write the head loss is equal to some constant factor into U average square by 2G, some constant factor into U average square by 2G, some constant factor into U average square by 2G, some constant factor into U average square by 2G, some constant factor into U average square by 2G. Now U average, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि U average किसका है. U average किसका मतलब U average एक given section पर. No, here you will have 2 U average ना. अरे here you will have different U average, here you will have different U average. So U average will always be of the pipe side. पाइप तो दोनों हैं, नहीं मतलब पाइप मतलब सिलेंडर की बात नहीं हो रही, पाइप की बात हो रही. पाइप मतलब छोटा डाया. सो यू एवरेज हमेशा छोटे डाया की तरफ का काउंट होगा. ऐसा क्यों सर? अरे क्योंकि यार सुलोचन दास एक्सप्रेस करने वालों ने उसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया, मैं क्या करूं. जिधर ज्यादा डायमीटर है उधर की यू एवरेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते तो वैसा हो जाता. इफ वी वुड हैव एक्सप्रेस्ड or if we would have derived the things not on the basis of the dia of minimum side, but by taking U2 common, then my formula will be U2 square by 2G. सब उसमें मैं क्या करूं? If at the time of deriving the formula, it's the U1 that has been preferred, in terms of which loss will be written, then what can I do? What can I do? Please remember, my dear friends, that
FL by D U average square by 2G, 1 minus A1 by A2 whole square, U average square by 2G. And then we have KL into U average square by 2G. And similarly, so on and so forth. ये losses के basis पर भी बहुत सारे problems किए जा सकते हैं. You can solve number problems on the basis of all these major and minor losses, चाहे जितने losses हों. Enlargement, then again enlargement, then again enlargement, then contraction, then bend loss, then of course there is major loss, friction loss, then another bend loss, finally exit loss. ये तो एंट्री हो रही है ना सर, पाइप से एग्जिट हुई बेटा. एग्जिट और एंट्री हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना. पाइप से एग्जिट को एग्जिट लॉस बोलेंगे और पाइप में एंट्री को एंट्री लॉस बोलेंगे. सो वी विल हैव टू राइट दिस एंटायर हेड लॉस एज द सम ऑफ फ्रिक्शनल लॉस हियर, देन enlargement loss as you go from A to B, then frictional loss in B length, then enlargement loss as you go from B to C, then frictional loss in this C length, then there is a contraction loss between C to D, then there is bend loss present at D, I mean frictional loss in D length, then there is a bend loss present at E, then there is a frictional loss present in F length, then there is a bend loss present at G, then there is a frictional loss present in H length, finally there is an exit loss. Please ये याद रख लो, ये actually important topic है. This is important topic and you are supposed to mug up all these 5 cases. ये पांचों cases आप रटने वाले हो बहुत अच्छे से. Please don't make sure that ये 5 के पांचों केसेस आप बहुत अच्छे से रटने वाले हो दोस्तों. तब आप इसी तरह से सम अप करके that entry plus friction plus exit, entry plus friction plus exit, total head loss कितना हुआ 8 मीटर, equated to 8 मीटर, equated to 8 मीटर. Entry loss 0.5 U average square by 2G, frictional loss FL by D U average square by 2G, and exit loss 1 into U average square by 2G. So equate it. Ultimately, you can calculate, verify Reynolds number 2300 से कम है तो फ्लो एक्चुअली लैमिनार है, क्योंकि F को आपने 64 by RE रखकर किया है. Ultimately, you can get the required discharge or something, जो भी पूछा हो. So problems. Keep this in mind that हाँ, तो भाई मैंने आपको बताया था that HF is equal to FL by D U average square, sorry, मैंने आपको बताया था that frictional power loss or head loss is 128 mu QL divided by pi rho G D power 4. This was done in 2 manners. This HF proportional to Q power 1 was obtained by experiments also, जो हेगन ने किए, and theoretical proof किसने किया? Theoretical proof, who did the theoretical proof? Theoretical proof was done by Poiseuille. Theoretical proof Poiseuille ने किया. अब हेगन साहब ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें सिर्फ इतना नहीं मिला था. When Hagen साहब conducted experiments, he did not only get this much, he got something more. He measures the pressure losses and he got that pressure losses, head losses are proportional to Q power 1. But then he found at high velocities, this head loss due to friction is proportional to discharge power 1.75. Discharge power 1.75. At low velocities, Poiseuille theoretically derived this. So at low velocities, it is stamped. It is approved now. कि हेगन साहब आपने experimentally जो पाया था, उसको approve कर दिया गया.
But why at high velocities you are getting something like this? That remained unanswered. That remained unanswered. और उसके आंसर्स इतिहास के पन्ने जैसे जैसे पलटे, उसके आंसर्स मिले। कैसे मिले ये जानेंगे हम लोग एक 10 मिनट के ब्रेक के बाद। After a break of 10 minutes, we'll meet again and we'll know that how exactly this puzzle was ultimately solved. That why at high velocities, this head loss being proportional to q power 1 is something that can be proved in a matter of 5 lines. हेड लॉस डिस्चार्ज के पावर 1 पर डिपेंड करेगा पाइप फ्लो के केस में। ये 5 लाइन में प्रूव कर दिया हमने हेगन-पॉइसली लॉ। 5 lines and we have proved it. But why at high velocities it is depending upon discharge power 1.75? What the hell is happening? ढूंढेंगे कि कैसे इस पहेली को सुलझाया गया बॉसिनेस्क, रेनॉल्ड्स से लेकर प्रेंटल साहब और उनके शिष्यों तक। After a break of 10 minutes. So, सबसे पहले बॉसिनेस्क साहब ने ट्राई किया इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने का 1870s में। उन्होंने कहा एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस वो वाली यूज कर रहे हैं ना लैमिनार प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए, जो उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बेसिस पर डिराइव की। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मानता है कि ये जो म्यू है ये मेनली वेलोसिटी डिफरेंसेस के कारण अराइज हुआ है, मिक्सिंग के कारण तो नहीं हुआ है। ये तो एक लेयर से दूसरी लेयर के वेलोसिटी डिफरेंस के कारण हुआ है, जबकि हाई वेलोसिटी पर बहुत सारी मिक्सिंग होगी और बहुत सारी मिक्सिंग होगी तो ये मिक्सिंग रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उन्होंने माना कि एक और शेयर स्ट्रेस है जो प्रेजेंट है। इस एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में नॉर्मली जो वेलोसिटी डिफरेंस है इसके अलावा एक शेयर स्ट्रेस प्रेजेंट है जो मिक्सिंग के कारण पैदा हो रही है। स्लो मूविंग पार्टिकल फास्ट मूविंग लेयर में जाते हैं और उसे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी एक टर्बुलेंट शेयर एग्जिस्ट कर रही होगी लेयर्स के बीच में, और वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं, कितनी मिक्सिंग प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करने वाली एक प्रॉपर्टी से डिसाइड होगी, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडी विस्कोसिटी। सो बॉसिनेस्क ट्राइड solving that puzzle for first time in 1870s when he said that basically when you're using Navier-Stokes equation, you are using tau is equal to mu du by dy, in which du is the difference of velocities between layers, and this tau is okay. But in case of turbulent flow, in case of high velocities, major contribution of shear will be separate one, and that turbulent shear will be because of mixing, because of slow moving particles entering into the fast layer and trying to drag it back. And that eventually will not depend upon which fluid are you talking about. That will only depend upon how much chaos is present, how much mixing is present, how much turbulence is present, कितना भागम भाग present है, कितनी दौड़म दौड़ present है, how much दौड़ भाग is present, कितनी ज्यादा मिक्सिंग प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं है, ये ध्यान रखना, इसको एडी विस्कोसिटी कहते हैं। बट बॉसिनेस्क का मॉडल चला नहीं बहुत ज्यादा। फिर आते हैं ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स comes into the picture and he says that eventually, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, he says that बॉसिनेस्क का कहना तो सही है कि एक अलग ही शेयर होगी टर्बुलेंट फ्लो के केस में, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। Osborne Reynolds says that there will be one separate shear that we are not able to predict using Newton's law of viscosity. There must be some separate shear between
the layers in case of a lot of mixing, in case of high velocities. And he told that actually that shear is going to be rho u dash v dash, where u dash is the fluctuating part of, only fluctuating part. U dash is the fluctuating part of horizontal component and V dash is the fluctuating part of vertical component. But sir, पाइप फ्लो के केस में वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, पाइप फ्लो के केस में तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं. हाँ, so vertical component is zero. Vertical component is actually zero, but sometimes it will be little flux mixing हो रही है ना. So because of mixing, average vertical velocity is zero only. But because of mixing, there is sometimes up, sometimes down, sometimes up, sometimes down. ऐसे ही axial velocity भी. Average value constant है. Average value will be same kahani, same kahani, same kahani, same kahani, same kahani. But there is some fluctuation present over and above that average value. There is some fluctuation present over and above that average value. My dear friends, Reynolds Saab said that yes, there Newton's law of viscosity is not going to explain the shear anymore. I'm telling you that in case of turbulent flow, there is another expression of shear stress that will be used, and that is rho u dash v dash. Inertia पर depend करेगा, normal viscosity property पर depend करने के बजाय. It will depend upon inertia. And u dash v dash will tell you how much mixing is present. U dash is telling you fluctuating part of velocity. V dash is telling you fluctuating part of velocity. Now, u value on an average is constant at each and every section. V value on an average is zero. But over and above those constant average values, थोड़ा कभी कोई पार्टिकल थोड़ा सा अप, कभी कोई पार्टिकल थोड़ा सा डाउन, कभी कोई पार्टिकल थोड़ा एक पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा फिर थोड़ा कम. मतलब सर ये स्टेडी फ्लो नहीं हो सकता. इन ट्रू सेंस टर्बुलेंट फ्लो कभी स्टेडी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पर कभी वेलोसिटी इतनी तो कभी वेलोसिटी इतनी. इन ट्रू सेंस टर्बुलेंट फ्लो कभी स्टेडी नहीं हो सकता. In a true sense, turbulent flow can never be a steady flow. It can never be a steady flow. Why? Because over and above that mean velocity, there are always fluctuations present. तो कभी उसी पॉइंट पर आप देखोगे तो वेलोसिटी, उसी पॉइंट पर वेलोसिटी 4.93 मीटर पर सेकेंड है, और कभी उसी पॉइंट पर आप देखोगे तो वेलोसिटी 5.06 मीटर पर सेकेंड है. On an average, you say at that point velocity is 5 meter per second. Cool. But we will still call it steady flow on the basis of mean speed. Mean speed की basis पर हम उसे steady flow कहेंगे. Proof नहीं कर रहे सर, लेकिन ये actually सही साबित हुआ. ये actually सही साबित हुआ. अब आप इस टाउ ध्यान से समझिए. अब आप इस टाउ को यूज करें, अब आप इस टाउ को यूज करें और इस वॉल शियर स्ट्रेस के, रेनॉल्ड्स शियर स्ट्रेस के फॉर्मूला को यूज करके कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें. वो आसान नहीं है. That's not easy. That was done by Prandtl. Prandtl said that first of all, fluctuate, क्योंकि फ्लक्चुएशन रैंडम है तो फ्लक्चुएशन सारे डायरेक्शंस में बराबर होनी चाहिए. नहीं, ये नहीं समझा मुझे. जो मैंने बोला वो समझो. क्योंकि फ्लक्चुएशन मॉलिक्यूल्स में जो इधर उधर की मिक्सिंग है वो रैंडम है, वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है. इसलिए वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है तो फिर सब तरफ रैंडमनेस तो हर तरफ बराबर होती है.
अगर एक डाइस को आप 600 बार रोल करेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 100 बार आपको 1 मिलेगा, ऑन एन एवरेज लगभग 100 बार आपको 2 मिलेगा, ऑन एन एवरेज लगभग 100 बार आपको 3 मिलेगा, लगभग 100 बार 4, 100 बार 5 और 100 बार 6 मिलेगा। क्योंकि रैंडमनेस इज नेवर बायस्ड, randomness is not biased. Randomness, if it is really random, then it will be uniformly spread in all directions, and therefore due to the randomness, Prandtl says that fluctuation of velocities must be similar in all possible directions, and Reynolds shear stress becomes something like this. Reynolds shear stress becomes something like this. Now, you would be amazed the way Prandtl related this U dash with main velocity of flow. You will be amazed at the way Prandtl related this U dash value with the main velocity of flow. Main velocity U, actually उसे आप break करके लिख रहे हो U plus U dash, और actual vertical velocity तो कुछ है ही नहीं, उसे आप लिख रहे हो 0 plus V dash. The vertical velocity is not present, you are writing it 0 plus V dash. Horizontal velocity is present, you are writing it U plus U dash. My dear friends, look and try understanding how Prandtl expressed that fluctuating part of velocity as a function of actual velocity, as a function of major velocity, as a function of major velocity. He says that in delta y length, velocity is, major velocity is changing delta u, delta y length, major velocity is changing delta u. So in unit length, major velocity will be changing delta u by delta y. And now suppose there is some length L in which the change in major velocity is such that it starts giving me the fluctuating part of velocity there. Then that L length will be known as mixing length. I repeat once again, Prandtl says that in delta y length, change in velocity is delta u. In unit length, change in velocity will be delta u by delta y. So in L length, I can write change in velocity L into delta u by delta y. Now, he says that let's say that L length is such that the change in main velocity in that L transverse length starts giving me the fluctuating part of the velocity there. He says that length L is chosen in such a way that change in main velocity over this transverse length L becomes equal to fluctuating part U dash of the velocity at that position. Then this length L is known as mixing length. देख रहा है विनोद कैसे एक अननोन को सॉल्व करने के लिए दूसरा अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब चलो ढूंढो कहीं से मिक्सिंग लेंथ की वैल्यू क्या होगी। Now just to get rid of this U dash, I'm introducing one extra headache now. That okay, I'm going to have Reynolds shear stress tau wall is equal to rho U dash square. So I'm going to write it L square du by dy square. But what is the value of this L? What is the value of this L? चलो tau wall को इधर ले लो, tau wall सॉरी रो को इधर ले लो, तो आपको मिलेगा L du by dy under root tau wall by rho. Under root tau wall by rho, under root tau wall by rho, ध्यान से समझियो, under root tau wall by rho, my dear friends, is going to have unit of velocity. And if it is having unit of velocity, people started calling it by the name क्योंकि उसमें frictional shear stress involved है, इसलिए friction velocity या shear velocity कहना शुरू कर दिया. Under root tau wall by rho is, if I explore its units,
its units happen to be meter per second. अरे मीटर पर सेकंड तो यूनिट होती है वेलोसिटी की, तो उसे एक नया नाम दिया गया फ्रिक्शन वेलोसिटी या shear velocity. Now I have shear velocity is equal to L du by dy, but the question is again same in this differential equation. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप ये ना बताओ कि वो L क्या है। और वहां प्रेंटल्स आपके एक शिष्य आते हैं और कहते हैं, देयर स्कॉलर ऑफ प्रेंटल comes and he says, Von Karman says that L will be depending upon y. L will be depending upon y. L will be a linear function of y. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जहां पर वेलोसिटी ही कम है, वहां जहां पर वेलोसिटी में स्लोप ज्यादा है, चेंजेस ज्यादा हैं, वहां कम लेंथ में ही वेलोसिटी इतना चेंज हो जाएगी कि वहां के यू डैश को देने लग जाएगी। So at y1 we will have lesser mixing length required, but जहां पर वेलोसिटी में चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं, वहां हमें ज्यादा लेंथ कवर करनी पड़ेगी, so that मेजर वेलोसिटी का चेंज, मेजर वेलोसिटी में होने वाला चेंज हमें फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट दे सके। So his logic, his argument is wonderful, that near the wall slope of velocity profile is very high, so the velocity is changing very fast, and if I want the change in major velocity to give me the fluctuating component, I will need to cover very small transverse length, but at higher part velocity profile is almost flat, so if I go there I will need to cover, and if I want change in major velocity to give me fluctuating part of velocity, then I will have to cover more length. इस चीज को बाद में एक बार फिर से देखना, जिन्हें ना समझ में आया हो, और आप बोलोगे, अरे आप बोलोगे, आप रह ही नहीं पाओगे ये बोले बिना, आहा ओहो आहा ओहो, because nobody can tell you the intuitive way to understand these things. Von Karman says that mixing length will be proportional to y, and the proportionality constant is known as kappa. Kappa. Its value is 0.4. So now my Reynolds shear stress becomes something like this. I integrate this and I get universal velocity profile for turbulent flow. मुझे मिलता है यूनिवर्सल वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो। फिर उसी को सिंप्लीफाई करके ये फाइनल रिजल्ट्स पाए गए हैं। These final results have been obtained by simplifying. दो केसेस अराइज होंगे, एक जब रफनेस लैमिनार सब लेयर की थिकनेस से काफी कम हो, उस केस में ये यूनिवर्सल वेलोसिटी प्रोफाइल को इस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है। याद रखना, U star is nothing but, keep this in mind that U star here is nothing but under root wall shear stress divided by rho. So it has been simplified in this manner. The velocity profile has been simplified in this manner. And if the roughness of the surface is, if roughness of the surface is more than laminar sublayer thickness, much more than laminar sublayer thickness, if roughness is much more than thickness of laminar sublayer, then it has been simplified in terms of roughness. ये हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ का केस हो गया। याद है मूडीज चार्ट में एक्सप्लेन किया था मैंने, एक एक्सट्रीम केस जब सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करेंगी चीजें, और दूसरा एक्सट्रीम केस जब सिर्फ रफनेस पर डिपेंड करेंगी चीजें। Then this universal velocity profile can be reduced into
something like this. Okay, now उसको फर्दर दोनों ही केसेस में और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर लाइक दिस. जिन दोनों को फिर फर्दर हम, अगर हमें यू मैक्स या यू एवरेज फाइंड आउट करना हो तो भी कर सकते हैं. मैंने सिर्फ पहले वाले के लिए किया है क्योंकि पहले वाले के लिए ही theoretical results possible हैं. Further theoretical results are possible only for hydrodynamically smooth pipe. So hydrodynamically smooth pipe के लिए अगर ये जो मिला हमें, this one, this last one, देखो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मिक्सिंग लेंथ वगैरह सब बाउंस कर जाता और सब आपको दिखा दिया जाता कि ऐसा होता है. ये फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा. Nobody is going to ask you the question about exact velocity profile. They will only check whether you know the concept of mixing length or not, whether you know the concept of eddy viscosity or not, whether you know the concept of Reynolds shear stress or not. अरे आपको एडी विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट मालूम है क्या? अरे आपको फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट मालूम है क्या? आपको रेनॉल्ड्स शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट मालूम है क्या? आपको मिक्सिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट मालूम है क्या? क्या है मिक्सिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट? वो ट्रांसवर्स लेंथ जिसमें मेन वेलोसिटी के होने वाले चेंजेस मुझे फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट देने लग जाएं. That much transverse length in which the changes occurring in the main velocity, that much transverse length in which changes occurring in the main velocity start giving me the fluctuating part of the velocity there. That length is known as mixing length. Now, Prandtl साहब के शिष्य से उनसे एक कदम आगे, Prandtl साहब के शिष्य से उनसे एक कदम आगे, Prandtl साहब के शिष्य कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, मैंने जाना है, समझा है that ये y पर डिपेंड करेगा मिक्सिंग लेंथ. This mixing length will depend upon linearly on y. And this is how we get simply the universal velocity profile. हाँ, उसके बाद की कहानी काफी जटिल है. After that, the story is really very complicated. So the story has been divided into two parts. One part is perfectly smooth case when roughness doesn't matter. Another is wholly turbulent. Another is wholly turbulent flow when Reynolds number doesn't matter, only roughness matters. So उसके लिए इस universal velocity profile को in respective parts में reduce किया गया है. They have been reduced on these respective parts. These are the final results. Now this one I have worked further upon. इस पे मैंने further काम किया है आगे. So इस पे मैंने काम किया है and ये काम किया है क्या? अब इसको मैंने पहले तो पाइप के लिए चेंज कर लिया. ये किसी भी बाउंड्री के लिए था. It was for any general boundary, so I'm changing it for the pipe. It was for any general boundary, so I'm changing it for pipe by writing y as capital R minus small r. Then I get center पर small r is equal to 0 पर u max. Integrate करेंगे तो u average मिलेगा. Once we integrate it, we will be getting the u average. U average और u max के बीच में रिलेशन भी मिल जाएगी. U average U max के बीच में रिलेशन, ये मेमोराइज कर लो. Memorize this for hydrodynamically smooth turbulent flow. For hydrodynamically smooth turbulent flow, please memorize this. Pipe flow के केस में U max होता है 2U average, but only if it is laminar. Pipe flow के केस में U max होता है 1 plus 1.33 under root F if it is turbulent, but this is valid only for hydrodynamically smooth. For hydrodynamically smooth. Cool? So hydrodynamically smooth के लिए general universal profile, and then for hydrodynamically smooth turbulent flow, it is ultimately reduced into something like this, something like this. Now,
This is not, till now it is not pipe flow, it is any general boundary. After that, pipe flow, I can write distance from the boundary is equal to R, capital R minus small r. Then I reduce it in terms of capital R and small r. I put at center maximum velocity must be there. So I get the maximum velocity formula. Then I use area into U average is equal to velocity into differential area ka integration. So I get a relation between U average and I get an expression for U average. Now I simply divide them to get one relation between U max and U average, and then I simplify this further and further and further and further. ये U average by U star को अपन लिख सकते हैं √8/f, वो वहां मैंने प्रूफ किया है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोलब्रुक इक्वेशन का एक पार्ट मिलता है जिसमें एप्सिलॉन गायब हो जाए. If we simplify this average velocity expression further and further and further, तो आगे जाकर बाबा प्रकट होंगे. As we go further, Baba comes into the picture. And we get one part of Colebrook equation. If Colebrook equation में epsilon को 0 रख दोगे तो यही मिलेगा. In Colebrook equation, if you put epsilon is equal to 0, then you are going to get this only. In Colebrook equation, which is an empirical relation, if you put epsilon is equal to 0, then you are going to get this only. अब इसमें एक लास्ट बात याद रख लो. सर ये बता दो आप याद क्या रखना है, ये बता दूं. चलो, ये कहीं तो मैंने बताया होगा कि याद क्या रखना है. हाँ, याद क्या रखना है वो बताया गया है. याद रखना है एक तो ये कि टर्बुलेंट के केस में लगभग क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा फ्रिक्शनल पावर लॉसेस. फर्स्ट थिंग, you will have to remember that in case of turbulent flow, frictional power losses will be proportional to discharge power almost 2. Second thing, Reynolds shear stress predicts that Newton's law of viscosity can't be used anymore. We will have turbulent shear ka different formula. In case of turbulent flow, there will be a different expression needed for shear stress, because now shear stress is not because of the nature of fluid, but now shear stress is arising because of mixing of the fluid particles and more fluctuation, more mixing. रेनॉल्ड्स साहब कहते हैं कि अब किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण शियर नहीं अराइज होगा, अब तो मिक्सिंग के कारण शियर अराइज होगा, और मिक्सिंग उतनी ज्यादा जितने ज्यादा फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स. As much as fluctuating components are present, mixing will be more and more and more. So there will be more mixing present. Okay, and then you remember please mixing length ka concept, and then you remember L is equal to ky, where k is kappa. Then you remember universal velocity profile. जो याद रखना है turbulent के लिए वो मैं highlight कर दे रहा हूँ. Everything that you will have to memorize for turbulent, I'm highlighting it. So far, this whole discussion is not just for pipe. This whole discussion is the general discussion, चाहे external flow हो या internal flow हो. Whether it is external flow or it is internal flow, this whole discussion is valid. Then hydrodynamically smooth pipe, remember this. U max is equal to U average into 1 plus 1.33 into root F. Laminar के लिए याद ही है आपको, U max is equal to twice of U average. U max is equal to twice of U average. Turbulent hydrodynamically smooth pipe के लिए ये याद रखो. And F is equal to 64 by RE आपको याद है. आप प्लीज ये लास्ट F और रेनॉल्ड्स नंबर में ये एक रिलेशन याद रख लो, जो कि कोलब्रुक का ही एक केस है एप्सिलॉन को 0 रखने के बाद, और उसी का ऑल्टरनेटिव वर्जन ब्लासियस रिजल्ट. सो जितना मैंने हाईलाइट किया है वो याद रख लो.
Umax is equal to 2 U average. Umax is equal to 1 plus 1.33 root F into U average. F is equal to 64 by Reynolds number. F is equal to this blah, 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 blah. Or 0.3164 upon Reynolds number power 1 by 4. Sir, क्या ये किसी भी turbulent में use कर सकते हैं? No. Only when roughness effect is not there. If roughness effect is there, you go to Moody, you go to Colebrook. You go to experimental results only. These are semi-empirical results that can be obtained only and only and only for any special case. Either Reynolds number doesn't have any effect, only epsilon has the effect, the wholly turbulent flow, or hydrodynamically smooth case when roughness doesn't have any effect. अगर Reynolds number और roughness दोनों का effect होगा तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर ही रिलाई करना पड़ेगा. If the effect of Reynolds number and roughness factor both are present, then you will have to rely on experimental results only. Whatever part is highlighted, please mark it up. इतना याद रख लोगे. टर्बुलेंट में एक्चुअली इतना भी ज्यादा है, बट ठीक है, मेरे छात्र हो तो याद रखना चाहिए. चलते हैं हम लोग दोस्तों एक्सटर्नल विस्कस फ्लो के पास. नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सटर्नल विस्कस फ्लो. सो लेट्स गो अहेड टू द एक्सटर्नल विस्कस फ्लो. So viscous flow external. We already know our main objective is to calculate the drag force. And we have already discussed about this, that using dimensional analysis, we ultimately get that coefficient of drag is a function of 1 upon Reynolds number. Coefficient of drag must be a function of 1 upon Reynolds number. Okay? Coefficient of drag must be a function of 1 upon Reynolds number, whether it is external flow or it is internal flow, whether it is pipe flow or it is flow over a car. चाहे एक बिल्डिंग के ऊपर से होने वाला फ्लो हो या दो प्लेट्स के बीच से होने वाला फ्लो हो. हाँ, चाहे एक पाइप के अंदर से होने वाला फ्लो हो या फिर एक बिल्डिंग के ऊपर से होने वाला फ्लो हो, दिस जनरल conclusion is always valid. Now, CD is what? CD is FD upon half rho V square into area. So basically, I can write FD is equal to CD into half rho V square into area, where CD will be a function of 1 upon Reynolds number. Cool, बहुत अच्छी बात है. अब हम लोग आते हैं अपने टूल्स पर. हमें पता है ऑलरेडी that law of mass is mass आया is equal to mass रुका plus mass गया. Differential form, dou u by dou x plus dou v by dou y is equal to dou u by dou x plus dou v by dou y is equal to 0. Okay, what about momentum? Momentum आया, फोर्स ने कुछ मोमेंटम बढ़ाया, कंट्रोल वॉल्यूम का मोमेंटम या तो इंक्रीज डिक्रीज होगा, स्टेडी फ्लो है तो नहीं होगा, और कुछ मोमेंटम जाने वाले फ्लूइड पार्टिकल्स के साथ चला गया. Some momentum is coming into the control volume with incoming fluid particles, plus the force has given some momentum. It is responsible for either the momentum going out or the rate of increase of the momentum within the control volume. Okay, we know Newton's law that rate of change of momentum is due to the force, but in case of control volume, rate of change of momentum is not only due to the force, but also due to the fluid particles entering and fluid particles leaving. Differential form, Navier-Stokes equation. Pressure force per unit volume, viscous force per unit volume,
gravity force per unit volume is equal to mass into acceleration. Is equal to mass into acceleration. Now, we understand continuity and then we understand Navier-Stokes equations. We are going to use the Navier-Stokes equations further to prove something called Prandtl's boundary layer equations. ये कैसे याद रखने वाले हो आप? मुझे नहीं पता, याद रखने वाले हो मालूम है। देखो माइनस dp बाई dx प्लस u में सेम कहानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी x में होने वाले चेंजेस u में एटलीस्ट सेकेंड डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट नहीं होगा। In u velocity, we don't have same kahani anymore, but still that change in velocity in x will not be so significant that second derivative becomes 0. Now, only second derivative with respect to y is remaining. Steady flow means with respect to time, there is no change. So I get u du by dx, u dou u by dou x plus v dou u by dou y. Okay. Ultimately, I get minus dp by dx plus mu into second derivative of velocity is equal to rho u dou u by dou x plus v dou u by dou y. Now, one thing it can be proved that pressure would vary only in x. तो इसलिए ये टोटल डेरिवेटिव हो गया, वो हम प्रूव करेंगे। एक फर्दर बात दैट इसे मैंने सेकेंड डेरिवेटिव को ब्रेक कर दिया है म्यू डी यू बाई डी वाई में, सो दैट आई कैन राइट टाउ। ऑफ कोर्स एनालिसिस जितनी भी हम पहले भी कर रहे हैं, पिछले भी चैप्टर में और इस चैप्टर में भी, वो सिर्फ और सिर्फ लैमिनार तक सीमित है। दिस whole analysis using Navier-Stokes equation that we have done in previous chapter also, that we are doing in this chapter also, that is limited to laminar. So we can use Newton's law of viscosity. This is one thing that we are going to prove further, that dp by dx can be written as rho u infinity du infinity by dx. In fact, proof यही मैं बता देता हूं फटाफट, that बहुत ही सिंपल है। देखो ये मैं प्रूफ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि Prandtl's इक्वेशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स के इतिहास में। इन द हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, Prandtl's equation is actually a major turning point. So therefore, Prandtl's equation को समझ लो थोड़ा सा। That what I'm doing here is, so please do understand the Prandtl's equation a little bit. What I'm doing here is I'm starting with Navier-Stokes equation. Well, body force is negligible, is equal to density multiplied by acceleration, dou u time x y u v time x y u v. Now this becomes 0 because the flow is steady. Okay. Now dp by dx को लिखा जा सकता है माइनस रो u infinity du infinity by dx. dp by dx can be written as minus rho u infinity du infinity by dx, and this can be written as d by dy of mu du by dy, This side I have u dou u by dou x plus v dou u by dou y. Now this becomes tau. So I get d tau by dy plus rho u infinity du infinity by dx is equal to rho u dou u by dou x. Rho से divide कर देंगे अपन. We will divide by rho, and if we divide by rho, we are going to get 1 upon rho d tau by dy plus u infinity du infinity by dx is equal to
u dou u by dou x plus v dou u by dou y. Now, let me tell you that what's the purpose of doing all this? Let me tell you that what's the end of the day, what's the purpose of doing all this? Why the hell Prandtl is doing all this? Prandtl साहब क्यों कर रहे हैं ये सब? Prandtl साहब इसलिए कर रहे हैं ये सब, ध्यान से समझियो। Prandtl साहब क्यों कर रहे? Prandtl साहब इसलिए कर रहे क्योंकि Prandtl साहब कहते हैं कि लो जी, क्योंकि Prandtl साहब कहते हैं कि लो जी, Prandtl साहब कहते हैं कि लो जी एक मोमेंटम से मिला और लो जी एक मोमेंटम से मिला और लो जी एक कंटिन्यूटी से मिला। सॉल्व कर लो जो सॉल्व कर सको इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। डिफरेंशियल इक्वेशंस कई बार होता है सॉल्व ही नहीं की जा सकती। Solve both these equations, differential equations, to get u and v as a function of x and y in a two-dimensional flow field. In a two-dimensional flow field in which initially a uniform stream entered and then and ultimately, my dear friends, there is some u existing as a function of xy and some v existing as a function of xy. Some u is existing as a function of xy, some v is existing as a function of xy. So go ahead and use these two differential equations. And है कोई माइका लाल जो इन दोनों को सॉल्व कर सके? ना, माइका लाल तो नहीं है, लेकिन Prandtl का छात्र जरूर है। Prandtl का छात्र जरूर है जो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। मैंने एक बात नहीं एक्सप्लेन की है यहां पर, that how pressure has been expressed, how this dp by dx has been expressed. अरे dp by dx has been expressed using the dp by dx has been expressed using the Bernoulli's equation. dp by dx has been expressed using the Bernoulli's equation. कहां गया? dp by dx is equal to rho u infinity du infinity by dx. This has been done by using Bernoulli's equation. 1 upon rho g dp by dx plus differentiate this and I'm going to get dp by dx is equal to this. My dear friends, but Bernoulli's कैसे यूज कर लिया? ये तो विस्कस फ्लो है। बाउंड्री लेयर के बाहर अभी भी लेयर से लेयर तक कोई वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है, और कोई वेलोसिटी डिफरेंस नहीं है तो टाउ नहीं होगा, टाउ नहीं होगा तो विस्कस शियर स्ट्रेस नहीं होगी, विस्कस शियर स्ट्रेस नहीं होगी तो बाउंड्री लेयर के बियॉन्ड अभी भी हम इनविसिड फ्लो ट्रीट कर सकते हैं, इनविसिड फ्लो ट्रीट कर सकते हैं तो बर्नौली यूज कर सकते हैं। But this was viscous flow, na? Why and how the hell are you using Bernoulli's equation? How the hell are you using Bernoulli's equation to get this dv by dx is equal to minus rho u infinity du infinity by dx? Because beyond the boundary layer, we still have no layer to layer velocity difference. So beyond the boundary layer, velocity is uniform and therefore there is no shear stress and the flow is inviscid. Bernoulli's equation zindabad, Euler's equation zindabad. बाउंड्री लेयर के अंदर हो, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जिंदाबाद, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिंदाबाद। बाउंड्री लेयर के बाहर हो, बर्नौलीज इक्वेशन जिंदाबाद, आइलर्स इक्वेशन जिंदाबाद। सो नाउ कंटिन्यूटी और नेवियर-स्टोक्स यूज करने के बजाय कंटिन्यूटी और Prandtl's बाउंड्री लेयर इक्वेशन यूज करो। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग continuity and Navier-Stokes, use continuity and Prandtl's boundary layer equation. Now Blasius found the exact solution of these two equations.
दैट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, करेंगे और u और v को एक्सप्रेस करेंगे, और u और v आ गए तो टाउ फाइंड आउट करेंगे, टाउ फाइंड आउट हो गया तो छोटे एरिया पर टाउ इंटू डी एंड बड़े एरिया पर फ्रिक्शन फोर्स भी फाइंड आउट करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये u x और y के फंक्शन के तौर पर ब्लासियस भी नहीं बता पाए कि क्या है। इट्स ओनली अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दैट इज पॉसिबल। Prandtl's boundary layer equations, no matter howsoever simple they seem to be, they cannot be solved exactly. His own scholar solved them, but eventually only the numerical solution. So Blasius साहब कह रहे हैं कि हम जानते हैं क्या है, कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ये हम जानते हैं, बता नहीं सकते। जानते हैं, बता नहीं सकते आपको। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है हमारे पास, बस देयर इज ओनली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? और उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो टाउ नहीं पता चलेगा, टाउ नहीं पता चलेगा तो फिर ड्रैग फोर्स नहीं पता चलेगा प्लेट पर, तो कैसे क्या करोगे? अब ब्लासियस साहब ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन आप आगे कुछ नहीं कर सकते, बट उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को ही यूज करके अल्टीमेटली फाइंड आउट किया ड्रैग कोएफिशिएंट। यूजिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ओनली ही फाउंड द ड्रैग कोएफिशिएंट, बट देन मजा नहीं आया। तो प्रेंटल साहब के एक दूसरे शिष्य आए। कौन? ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले चैप्टर में आपको, वॉन कैरमैन साहब के बारे में। वॉन कैरमैन साहब के बिना एरोडायनेमिक्स की फील्ड आज जहां पर है वहां पर नहीं हो सकती थी। कैरमैन्स वर्क इज अनमैचेबल, अनमैचेबल, अनमैचेबल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अनमैचेबल प्रैक्टिस के साथ आ जाओ। कैरमैन्स वर्क इज अनमैचेबल, बट माय डियर फ्रेंड्स, कैरमैन सेज दैट मजा नहीं आया ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हमें जब तक वेलोसिटी दिखे ना एज ए फंक्शन ऑफ वाई, जैसे इंटरनल फ्लो में दिखा था, जैसे इंटरनल फ्लो में दिखा था 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे रहता है तो मजा आता है। क्यों? क्योंकि फिर हम न्यूटन्स लॉ का यूज करते हुए टाउ तक पहुंचते हैं और टाउ को इंटीग्रेट करके फ्रिक्शन फोर्स तक पहुंचते हैं। तो भाई मजा नहीं आया, तो भाई मजा नहीं आया। जब तक ये वेलोसिटी हमें ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना मालूम हो तब तक मजा नहीं आया। और इसलिए कारमान साहब कहते हैं एकदम सीट बेल्ट बांध लो, एकदम टाइट बैठो, मजा पूरा आएगा। ब्लासियस ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दुनिया को बताया, लेकिन मजा ना आया। Blasius told that thickness of boundary layer will change like this, that coefficient of drag, which is drag force upon half rho u infinity square into area, coefficient of drag will be inverse function of Reynolds number, 1 upon Reynolds number. आज का सेशन जहां से शुरू हुआ था कि अरे
एक्सटर्नल हो या इंटरनल, अरे लैमिनार हो या टर्बुलेंट, अरे पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा हो या गाड़ी के ऊपर से फ्लो हो रहा हो, अरे मछली पानी में तैर रही हो या फुटबॉल हवा में उड़ रहा हो, coefficient of drag will always be a function of 1 upon Reynolds number. कि केस कोई भी हो, coefficient of drag 1 upon Reynolds number का फंक्शन होगा. Blasius in case of flat plate, in case of flat plate, Blasius says that yes, that is correct. Using Prandtl's boundary layer equations, he get that. But जब तक velocity को ऐसे express ना करें, मजा ही नहीं आया. Unless we have this kind of expression for velocity, मजा नहीं आया. खरमान साहब आते हैं और कहते हैं मजा आने की गारंटी इधर है, मजा आने की गारंटी इधर है. सबसे पहले तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मोमेंटम इक्वेशन एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करते हुए खरमान साहब एक रिलेशन डिराइव करते हैं. मैं उस डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको रटनी है वो रिलेशन. आई एम नॉट डिराइविंग दैट रिलेशन, बट प्लीज डू मग अप this relation. This is called von Karman's integral momentum equation for zero pressure gradient. Zero pressure gradient means flow is happening because of its own kinetic energy. There is no pressure difference driving it. Zero pressure gradient means that flow is taking place because of its own kinetic kinetic energy. There is no pressure difference driving it. कोई pressure difference उसे drive नहीं कर रहा है. Zero pressure gradient. Flat plate के केस में ही valid होगा. सिलेंडर वगैरह के केस में या किसी दूसरी बॉडी के केस में प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो ही जाएगा. एरिया फ्लो एरिया चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो बर्नौली से प्रेशर चेंज होगा. बट सर बर्नौली कहाँ वैलिड है, विस्कस फ्लो है. अरे सुलोचन दास, बाउंड्री लेयर के बियॉन्ड तो अभी भी यूनिफॉर्म ही है ना सब कुछ. लेकिन सर देखो ना आप, इतनी सारी थिकनेस में तो यूनिफॉर्म नहीं है. अरे इतनी थिकनेस, कितनी थिकनेस, इतनी थिकनेस, इतनी थिकनेस. That much thickness is very little thickness. That boundary layer is not actually like 2 kilometers or something. तो अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से फ्लो हो रहा है तो एक छोटी सी पतली सी लेयर डेवलप हो रही होगी. There will be a thin layer developing. Above and beyond that, the velocity will be uniform. My dear friends, this, I don't know how you are going to mug it up, but you are going to mug it up. Von Karman's momentum integral equation, Von Karman's integral momentum equation, and then यहाँ velocity का expression आपको assume करना पड़ेगा. पहले पिछले चैप्टर जैसा नहीं होगा. velocity का expression assume करो, न्यूटन्स लॉ में रखो, टाउ वॉल कैलकुलेट करो. दूसरी तरफ इसमें इस इक्वेशन में जो थीटा है उसका एक्सप्रेशन याद रखो. उस थीटा को कहते हैं मोमेंटम थिकनेस, एंड थीटा की वैल्यू उस बाउंड्री, उस अज्यूम्ड वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करो. दोनों को मिला के वॉन कैरमैन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन में पटक दो. आपको अंततोगत्वा मिल जाएगा दैट बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे x के साथ चेंज हो रही है. ओके, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वेलोसिटी यू आर डीलिंग विद, नो मैटर, जैसी भी वेलोसिटी आपको दे दी जाए, no matter which velocity is given to you, parabolic, linear, parabolic, cubic, whatever. So for example, this linear one, parabolic, कुछ भी दे दी जाए, any one is given to you. End of the day, you'll have to follow one common procedure. So following that one common procedure,
you will get always the same thing. क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही इसको करने में मजा आता है, इसको करने में एक्चुअली मजा आता है। मान लो आपको लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है फ्लैट प्लेट के ऊपर। लेट्स से दे गिव यू द linear velocity profile over a flat plate. एक्चुअली क्या होता है सर? एक्चुअली तो ब्लासियस साहब ने फाइंड आउट किया था ना, वो होता क्या है? अरे मैंने बताया ना, है पर बता नहीं सकते। इट्स अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सो इफ दिस type of velocity profile is given, or parabolic, एंटर करने के पहले वेलोसिटी है u infinity, अभी भी beyond the boundary layer still you have u infinity only. At any given section, if it is parabolic, this is boundary layer thickness delta, by the way, or before entering it is uniform, u infinity, u infinity, u infinity, u infinity, u infinity, and after some length within the boundary layer there are differences present. Within the boundary layer u is a function of y. Beyond the boundary layer we still have u infinity, and maybe it is a cubic function of y. Maybe it is a cubic function of y. So every time you always repeat the same procedure. You start with theta is equal to u by u infinity 1 minus u by u infinity, this particular integral. अब ये इंटीग्रल एक्चुअली कारमैन्स इक्वेशन डिराइव करते समय अपीयर होता है, वी कांट हेल्प इट। एट द टाइम ऑफ डिराइविंग वन कारमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, this actually appears, we can't help it. So you always begin like this, 0 से लेकर डेल्टा तक, integrate this. This theta value actually appears at the time you are deriving von Karman's integral momentum equation. Von Karman's integral momentum equation derive करते समय ये अपीयर होता है। अब इसमें u by u infinity अगर मैं ये y by डेल्टा रख दूं, या u by u infinity की वैल्यू ये पूरी रख दूं, या u by u infinity की वैल्यू ये पूरी रख दूं, और फिर इंटीग्रेट करते जाऊं, देन पहले केस में आपको मिलेगा मोमेंटम थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस अपॉन 6, बाउंड्री लेयर थिकनेस अपॉन 6। दूसरे केस में मिलेगा मोमेंटम थिकनेस बाउंड्री लेयर थिकनेस इंटू 2 अपॉन 15। तीसरे केस में मिलेगा मोमेंटम थिकनेस 39 डेल्टा अपॉन 280। सेम प्रोसीजर again and again. Then you repeat the procedure as tau is equal to mu du by dy, because in case of laminar flow we still have Newton's law of viscosity valid.
वॉल पे देख रहे हैं तो y को 0 रखेंगे, म्यू du बाई dy। वॉल पे देख रहे हैं तो y को 0 रखेंगे, म्यू du बाई dy। वॉल पे देख रहे हैं तो y को 0 रखेंगे। So if you use this, you are going to get mu u infinity by delta. With parabolic profile, you will get 2 mu u infinity by delta. And with this one, you are going to get 3 mu u infinity by 2 delta. Now the third step is always going to be, ये दोनों को उठाकर पटक दो कहां? ये दोनों को उठाकर पटक दो वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन में। Both these values you are going to now take to von Karman's integral momentum equation. Von Karman's integral momentum equation. By the way, मैं फिर से बता दूं, थीटा कोई आसमान से टपकी हुई क्वांटिटी नहीं है। थीटा वो इंटीजर पूरा इंटीग्रेशन वॉन कैरमैन्स इक्वेशन को डिराइव करते समय अपीयर होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, उसका नाम दिया गया है, दैट्स इट। एट द टाइम ऑफ डिराइविंग वॉन कैरमैन्स मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग continuity and integral form of momentum equation, my dear friends, such an integral actually appears, so people gave it the name momentum thickness. Momentum equation derive कर रहे हैं ना, वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। सो मोमेंटम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, इसलिए मोमेंटम थिकनेस। बट थिकनेस क्यों? व्हाई थिकनेस? बिकॉज इट हैज द यूनिट ऑफ डेल्टा, इट हैज द सेम यूनिट एज द यूनिट ऑफ डेल्टा। अभी के लिए बाकी बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि उसको मोमेंटम थिकनेस कहने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, why we are saying it momentum thickness. So now you use this tau wall and you use this theta value. So 1/6 d delta by dx. And same procedure you are going to repeat in all of them. That delta into d delta, one side, and 6 mu u infinity upon rho u infinity square dx on another side, जिससे आपको अल्टीमेटली मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 3.464 अपॉन बाबा प्रकट होंगे इंटू एक्स। इसके लिए आप ऐसे ही करोगे एग्जैक्टली, तो आपको मिलेगा 5.477 बाबा प्रकट होंगे on the basis of defined on the basis of x, defined on the basis of x, बाबा प्रकट होंगे, and you will get something like this. Similarly for cubic, if you do for cubic, बाबा प्रकट होंगे। एक मिनट, लीनियर के केस में 3.464 नहीं मिलता है शायद, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बाय द वे, देयर इज नो नीड टू मग देम अप। पैराबोलिक में तो 5.477 है, करेक्ट है। इन केस ऑफ लीनियर, हाँ 3.464। अरे क्या ही तो बात है, क्या ही तो बात है। एंड देन इन केस ऑफ देयर इज वन क्यूबिक प्रोफाइल। क्यूबिक प्रोफाइल के केस में, cubic profile के केस में, if you simplify that, you are going to get 4.64 upon root REX into x. In case of cubic profile, तो यहां मैंने जो एक पेज में एक्सप्लेन कर दिया है, ये एक्चुअली एक ठीक ठाक टाइम टेकिंग एनालिसिस है, बट कहते हैं ना, जब रिवीजन मोड में आ जाओ
तो जिप हो जाती है पूरी फाइल. The whole file is zipped, compressed into one page when you are in revision mode. You are understanding also each and everything, and yet you are saving a lot of time, saving a lot of space. Now, if I match this result with exact result of Blasius, it is the cubic profile wala result that matches closely. अगर मैं Blasius के exact result के साथ इसे मैच करूं, तो Blasius का exact result है 5/√REx into x. Five upon root REx multiplied by x. 5 divided by root REx multiplied by x. तो ये वाला सबसे closely match करता हुआ result है. This result is the closely matching result. One last thing, चाहे linear हो, चाहे parabolic, चाहे cubic, चाहे Blasius exact solution, या कैसी भी velocity का कैसा भी expression दे दिया जाए. Any kind of expression of velocity given as a function of y, my dear friends, the same procedure is followed again and again and again. Now, similarly, in case of parabolic or linear, we already now know delta, how delta is varying. Delta is varying as a root x. No, root x x पे depend कर रहा है. Delta is depending upon x or root x. Root x. क्योंकि एक x बाबा में भी तो छिपा हुआ है. एक x बाबा में भी तो छिपा हुआ है. One x is hidden inside Baba as well. So delta will depend upon root x. लोग अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें जो उनके सामने हो रही होती हैं, दिखती हैं. आप बताओ ये पैराबोला कैसे लिखते हो आप ये पैराबोला ऐसे ही ना लिखते हो y is equal to something x square. नहीं, ये पैराबोला y is equal to something x square. This parabola is y is equal to something x square. How do you write this horizontal parabola? Horizontal parabola you write as x is equal to something into y square. And if you notice, जाने अनजाने आप यही तो बनाते हो बाउंड्री लेयर थिकनेस की ग्रोथ दिखाते समय. At the time of showing the growth of the boundary layer, willingly, unwillingly, knowingly, unknowingly, if you ask someone that how boundary layer will grow, that person will immediately draw a line like this. So delta is proportional to root x, but we are understanding something else. That let's calculate the drag on certain small length, and then we are going to integrate it. Let's calculate drag on certain small length, and then we are going to integrate it from some 0 length to L length to get the total drag. टोटल ड्रैग को सिंप्लीफाई करोगे, अल्टीमेटली बाबा प्रकट होंगे तो CD मिल जाएगा. Then you will get the expression of coefficient of drag. Same thing can be done in all cases. Like linear के केस में भी, parabolic के केस में भी, cubic के केस में भी, सब में वही किया जा सकता है. In each one of them, same thing can be done. So dimensional analysis, उसके बाद Prandtl's boundary layer equations, फिर Blasius का exact solution, फिर कारमैन साहब का इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन, फिर लीनियर हो या पैराबोलिक हो या क्यूबिक हो, सबके लिए ये रिजल्ट्स Blasius एग्जैक्ट सॉल्यूशन से लेकर, लीनियर प्रोफाइल से लेकर, पैराबोलिक प्रोफाइल से लेकर क्यूबिक प्रोफाइल तक, I can find out theta, momentum thickness. I can find out using mu du by dy. I can find out wall or shear stress at the plate. Then using tau and theta both in one Karman's integral momentum equation, I can find out the expression of delta.
And I can also find out the CF value, tau upon half rho u infinity square. I can also find out the CD value, integral of tau, that means total drag force upon half rho u infinity square into total area of the plate. सर आपको क्या ये सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी? लकीली सिर्फ पहला रो, लकीली सिर्फ पहली रो आपको याद रखनी है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है. Only the first row you will have to remember. Only memorize this one. अगर रखना ही है तो क्यूबिक याद रख लो, क्योंकि क्यूबिक के रिजल्ट्स एक्चुअल रिजल्ट्स से काफी क्लोज हैं. The results of cubic are very close to actual results. So if you want, you can memorize cubic as well. Cubic Q इतना accurate result देता है. Why cubic gives such accurate results? ये भी जो लॉजिक के साथ बताए वो unmatchable. Why cubic is giving results so close to actual exact results, वो भी मैंने explain किया है. That also I have explained. Here is the guideline. In exam, if there is no mention of velocity profile, or if the problem is based on comparison, then exact results of Blasius must be used. If any velocity profile is given, then there is no need of memorizing the results. Instead, the procedure must be practiced, which can be reproduced for any velocity profile. In class, we have repeated the same procedure for linear, parabolic, and cubic. In DPPs, we will get an opportunity to repeat the practice of same procedure for some more velocity profiles. But apart from memorizing Blasius results, it is recommended to memorize results of cubic velocity profile, since if a problem mentions velocity profile, maximum chances that they will mention cubic velocity profile, because this result is very close to actual results. Okay. Then some numerical problem, then some numerical problem, then some unmatchable, then blah 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 blah. Analysis तो यही सेम कहानी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कई बार. अब आते हैं दूसरे मेजर टॉपिक पर. Now we come to the next major topic of last chapter. And that next major topic is drag and lift forces. Drag force is the net force in the direction of the stream. Drag force जब भी एक फ्लूइड एक सॉलिड बॉडी से इंटरैक्ट होगा तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, जिसमें shear stress का contribution भी होगा और pressure का contribution भी होगा, in which there will be a contribution of shear also and there will be a contribution of pressure also. Now that is called drag force. Now similarly stream की direction के perpendicular net force उसे हम कहते हैं lift force. Lift force is the net force normal to the direction of a stream, in which shear stress will also have a contribution and pressure will also have a contribution. Shear stress will also have a contribution and pressure will also have a contribution. In case of flat plate, pressure doesn't have any contribution in drag because the whole pressure force is perpendicular to the stream direction. Only shear has a contribution in the drag. अब यहाँ pressure का कोई contribution नहीं है, तो सिर्फ shear का contribution है. shear का contribution फिर हमने फिर से एक बार क्यूबिक के लिए लिख के दिखाया है कि देखो ब्लासियस साहब का रिजल्ट है 1.328, हम 1.29 तक पहुंच पाते हैं. Using approximate analysis of Karman, we can reach up to 1.29. Blasius exact result is 1.328.
Okay, so we can reach up to this. What about the lift force here? Well, lift force is not there क्योंकि टाउ तो स्ट्रीम के पैरेलल है, तो वो परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं देगा. प्रेशर है परपेंडिकुलर, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. Pressure is perpendicular to the stream, but it is balancing from up and balancing from down. Balancing from up, balancing from down. Similarly, if there is a flat plate that we are keeping perpendicular to the stream, then pressure only will create a drag. Shear will cancel on the upper half and lower half. अपर हाफ पर और लोअर हाफ पर shear कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ प्रेशर ही क्रिएट करेगा ड्रैग, और वो CD वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर के साथ चेंज होगी. कैसे चेंज होगी वो आपको गिवन रहना चाहिए. CD वैल्यू विल बी a function of Reynolds number and aspect ratio, and that CD must be given to you. हाँ, ये जरूर आपसे एक MCQ में पूछा जा सकता है कि अगर एक फ्लैट प्लेट को स्ट्रीम के परपेंडिकुलर रखा जाए तो विस्कस ड्रैग होगा क्या? आप बोलोगे नहीं, प्रेशर ड्रैग होगा बस. ओनली प्रेशर विल कॉज अ ड्रैग. विस्कस ड्रैग ऑन द अपर हाफ एंड ऑन द लोअर हाफ विल कैंसिल ईच अदर. व्हाट अबाउट द लिफ्ट? आई मीन, वैसे तो वो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं, तो मैं इसको ड्रैग क्यों कहूं? लिफ्ट भी नहीं है क्योंकि अपर हाफ shear and lower half shear is balancing each other. Upper half shear, lower half shear is balancing each other. So flat plate kept along the stream, zero lift. Drag only because of tau. Flat plate kept perpendicular to stream, zero lifts. And drag only because of pressure. Flat plate kept inclined, drag both because of pressure and shear. Flat plate अगर inclined रखी जाए तो drag shear के कारण भी होगा और pressure के कारण भी होगा. Drag will be due to pressure as well as shear. Drag shear के कारण भी होगा, drag pressure के कारण भी होगा. अगर एक फ्लैट प्लेट को स्ट्रीम से इंक्लाइंड रख दिया जाए, then pressure will also cause a force along the stream, and shear will also cause a force along the stream. So there is a drag force due to pressure also, due to shear also. So end of the day, drag force is net force along the stream, in which we have some contribution of shear, some contribution of pressure. Lift force is the net force perpendicular to stream, again some contribution of shear, some contribution of pressure. ये अगर समझना हो कि ये टाउ डीए कॉस थीटा ऐसा क्यों लिखा है, तो बड़ा ही आसान है इसे समझना. That tau cos theta is the component and area से मल्टीप्लाई करना मजबूरी है. Similarly, P sin theta will be the horizontal component and area से मल्टीप्लाई करना मजबूरी है. हाँ, अब आपको ये CD और CL गिवन रहने चाहिए. This coefficient of drag and coefficient of lift must be given to you. Ultimately ये complicated expression का कोई लेना देना नहीं है, आपको बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये है मेन चीज. अल्टीमेटली हम उसे वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो ड्रैग हो चाहे लिफ्ट हो. Whether it is drag or lift, we ultimately express it in terms of velocity. Okay, so CD
and CL must be given. What about A? A will be taken as wetted area if it is, अगर ड्रैग लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट प्लेट, सुपर टैंकर, सबमरीन बॉडी या पानी का जहाज गिवन हो. This A will be taken as the ship or flat surface or super tanker or submarine body. If these are the cases, then wetted area will be used. And if there is a blunt body like a cylinder or a sphere, if there is a blunt body like a cylinder or a sphere which is creating a big obstruction in the path of the flow, then flow के direction में projected area लेना होगा. Then we will have to take the projected area in the direction of the flow. And अगर aerofoil bodies हैं तो planform area लेना होगा. What is this? What is this? Planform area क्या है? Planform area है, अगर aerofoil design है, ऐसी design है, तो आपको planform area लेना होगा. Plan मतलब top से देखने पर ये area लेना होगा. जैसे यहां पर हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है कि एक सुपर टैंकर है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज गिवन, सो वी जस्ट चेक वेदर द फ्लो इज लैमिनार और द फ्लो इज टर्बुलेंट. एक्सटर्नल फ्लो के केस में इफ इट इज रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 10 पावर, I mean less than 10 power 5, then it is laminar, and if it is more than 10 power 7 around, then it is turbulent. In between there is transition. So अब ये तो 10 power 5 से तो बहुत ज्यादा है, तो फ्लो मिक्स्ड है यानी कि शुरू में लैमिनार होगा फिर टर्बुलेंट हो जाएगा, शुरू में लैमिनार होगा फिर देखो यहां से आपको दिख रहा है इनफैक्ट, आहा ओहो, ये देखो दिख रहा है क्लियर कट, यहां तक फ्लूइड बड़ा स्मूथली गया और यहां से आपको फिर बवंडर क्रिएट होते हुए दिखने लगे. आफ्टर दैट यू सी अ lot of mixing happening. Okay, so you put that Reynolds number and calculate coefficient of drag and then blah 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 blah. इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स की जो जिनमें हमने इवन सिलेंडर वगैरह भी यूज किया, बट अगेन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग मस्ट बी गिवन टू यू as long as मैक्सिमम बेनिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर डाला, ये तो कैंटिलीवर बन गया. ओके, अब आते हैं हम लोग सिलेंडर और स्फीयर की कुछ स्पेशल बातें समझने पर. ये बातें वही समझ पाएंगे जिन्होंने मुझसे पोटेंशियल फ्लो सीखा है. इफ यू हैव लर्नड पोटेंशियल फ्लो in my classes, maybe revision, maybe comprehensive, you will be able to understand 90% of the things here. You will be able to understand 90% of the things here. We already now know the drag in which pressure and shear, both contributions are there, ultimately is reduced in this simplistic form. And we must know CD as a function of Reynolds number. We know lift in which pressure and shear both have a contribution is a force perpendicular to the stream direction created on the body, and in this coefficient of lift must be known. Area wetted area यूज करेंगे अगर शिप सबमरीन फ्लैट सर्फेसेस का केस है तो, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया यूज करेंगे अगर सिलेंडर या स्फीयर का केस है तो, एरिया प्लानफॉर्म एरिया यूज करेंगे अगर एरोफॉयल डिजाइन है तो. What about this area? What about this area? Area we will be using wetted area if it is the case of super tanker, or it is the case of ship, or it is the case of flat plate, plane surface, and we will be using area as projected area if it is the case of cylinder or a sphere, and we will be using the area as the planform area if it is the case of an aerofoil design. अगर एरोफॉयल डिजाइन है तो हम प्लानफॉर्म एरिया यूज कर रहे होंगे. ध्यान से समझियो. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोटेंशियल फ्लो व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल प्लस इरोटेशनल, सोर्स फ्लो
streamlines are theta is equal to 20, theta is equal to, sorry, streamlines are like, at 1 theta, 1 is streamline, at 1 theta, 1 is streamline, 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 1 theta, 1 is streamline. Uniform flow. At 1y, we have 1 streamline. At 1y, we have 1 streamline. At 1y, we have 1 streamline. Sync flow. At 1 theta, we have 1 streamline. At another theta, we have another 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 streamline. Just negative means they are all going towards the center. Source flow, they are going away from the center. And then we mix uniform flow plus source plus sink to create a flow that seems like flow over a cylinder. और उसके बाद हम ये यूनिफॉर्म स्ट्रीम और एक सोर्स और एक सिंक तीनों को सुपर इंपोज करते हैं, और तीनों को सुपर इंपोज करके मेरे प्यारे दोस्तों जो फ्लो दिखता है हमें वो ऐसा लगता है जैसे एक सिलेंडर के ऊपर से होने वाला फ्लो हो. Once we superimpose uniform flow and source and sink, the resultant flow seems like a flow. The resultant flow seems like a flow. That's like flow over a cylinder. That's like flow over a cylinder. My dear friends, if I superimpose all of them, I replace y as r sine theta, Cartesian coordinate to polar coordinate. I can express psi as a function of theta. Then psi की definition use करते हुए मैं azimuthal velocity calculate कर सकता हूँ सिलेंडर के ऊपर. उसमें r को कैपिटल R रखने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा. ये बीच में डैश 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 मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि क्लास में भी मैंने बताया था कि इसकी जानकारी आपको मैटर नहीं करती. This further जानकारी doesn't matter. Ultimately, if you do this entire procedure, you will get v theta component of the velocity, which is defined as dou psi by dou r, dou psi by dou r. My dear friends, that you r भी present होगा, ये याद रखना. ऐसे मत सोच लेना कि r present नहीं है. r भी present है psi में, तो अगर आप उसको differentiate करो, you are eventually going to get v theta as a function of r. But then you put in that function r is equal to capital R. Then at r is equal to capital R, you will get 2u infinity sine theta. अच्छा, ये सरप्राइजिंग नहीं है, गिवन दैट अगर मैं थीटा को 0 रखूं तो वेलोसिटी 0 मिलती है और मुझे पता है ये पॉइंट स्टैग्नेशन पॉइंट होगा. I know this point is going to be the point of stagnation. I know this is the point where velocity can't exist. हाँ, यहाँ के इधर को वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, नीचे वाले पार्टिकल्स में नीचे की तरफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी. But I know at this point velocity can't exist. So if I put theta is equal to 0 or I put theta is equal to 180, I actually get v theta is equal to 0. I actually get v theta is equal to 0. Now using that v theta is equal to 2u infinity sine theta. अच्छा, साइन थीटा का एक और कॉन्सिक्वेंस देखो. मतलब ये भले ही हमने बीच की डिटेल्स ना डिराइव की हो, लेकिन मजे की बात है ये बड़ा इंट्यूटिव है, क्योंकि ये कहता है कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी. और मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों ना मिले जब फ्लो एरिया इतना कम हो गया है तो. सो द फ्लो एंटर्स विद u infinity
at A and I apply Bernoulli's equation between A and stagnation point, so I get pressure must be more there. क्यों ना हो? VA is U infinity, VB is 0, so pressure at B is more than atmospheric pressure. Basically stagnation pressure. P naught plus मूव करते हुए फ्लूइड को लाकर रोक दिए, यहां प्रेशर तो बढ़ेगा ही. सो प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम. फ्री स्ट्रीम के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है. फ्री स्ट्रीम के प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है पहले. लेकिन टॉप तक जाते जाते अगर आप फिर से बर्नौली अप्लाई करो, फ्री स्ट्रीम और टॉप वाले पॉइंट के बीच में देयर वेलोसिटी, azimuthal velocity is maximum. I get pressure much less than free stream pressure. I get it P naught minus 3 by 2 rho u infinity square. P naught minus 3 by 2 rho u infinity square. P naught minus 3 by 2 रो u इंफिनिटी स्क्वायर. ध्यान से समझियो. सो अल्टीमेटली फिर मैं डी पर जाता हूं, वहां भी वेलोसिटी मालूम. सर मुझे एक बात, आप 1 मिनट पॉज ले लीजिए और ये बताइए बर्नौली कैसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत नैरो लेयर के बाद सारे लेयर्स अभी भी u इंफिनिटी पर हैं. तो अगर सारे लेयर्स u इंफिनिटी पर हैं, तो उन सारे लेयर्स के बीच में विस्कस shear स्ट्रेस 0 होगा. Because all the layers beyond boundary layer, we still have all the layers at same velocity. So if I'm using the Bernoulli, I'm not doing anything incorrect, particularly to find out pressure value. प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि प्रेशर एक गिवन सेक्शन पर एक जैसा रहेगा. It can be proved that at one given section pressure will remain same within the boundary layer or beyond boundary layer. So I once again get the same pressure. Basically, I am getting more pressure at the front of the cylinder, more pressure at the bottom, at the rear of the cylinder, and at the top and bottom least pressure value. And this is kind of so intuitive. ये कितना intuitive है. यहां फ्लो एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा. यहां फ्लो एरिया की कमी पड़ गई है. Here there is flow area becoming lesser. So flow area less, velocity becomes more, pressure becomes less. But whatever it is, this pressure equal to pressure of the free stream occurs around at theta is equal to 30 degree. तो ज्यादातर मछलियों की आंख उसी एंगल पर होती है. ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रूव किया है, दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स दैट फ्लो ओवर अ सिलिंड्रिकल बॉडी will have maximum pressure here because a moving fluid have been brought to rest. ये तो आपने compressible flow में भी देखा है that stagnation point represents maximum possible pressure, maximum possible thermal energy it has. क्योंकि एक moving fluid को आप rest पर लेकर आए हो तो stagnation pressure है वहां. तो मछली की आंख यहां नहीं होती, वहां होती है जहां प्रेशर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, फ्री स्ट्रीम प्रेशर जैसा ही हो जाए. After certain angle theta, the pressure is same as the free stream pressure. But whatever it is, the distribution is
symmetric. We have greatest pressure here, we have greatest pressure here, we have least pressure here, we have least pressure here. तो सर वहां लीस्ट प्रेशर है तो मछली की आंख वहां क्यों नहीं है? ए भाई, क्या खा के बैठे हुए हो? हाँ, अरे मछली को आगे देखना है, ऊपर थोड़ी ना देखना है कि आसमान के नजारे लेने हैं। तो आगे देखना है तो आंख यहां कहीं रहना पड़ेगा। इस पर भी आते हैं, इस पर। अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि मछली की आंख कहां है, अब आप अभी उसको भी देखोगे कि यहां के बाद से इस सिलेंडर को ऐसा क्यों जाना पड़ा। Why this cylinder has gone like this? My dear friends, this whole distribution obtained on the basis of potential flow theory seems like symmetric. And if it is symmetric, there will be zero pressure drag. ये तो symmetric निकला, ये symmetric निकला, तो pressure drag तो zero रहेगा। और viscous drag खासकर अगर एयर वगैरह है तो सिग्निफिकेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि एयर वगैरह के लिए म्यू वैल्यू इज वेरी स्मॉल। सो वी अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर there should be no pressure drag, net pressure force will cancel each other, and due to the very less viscosity of fluids like air, viscous drag should also be zero. Even if we consider the effect of boundary layer, it should not cause much viscous or frictional drag, because, my dear friends, viscous drag अल्टीमेटली म्यू पर डिपेंड करेगा, और हवा की विस्कोसिटी इतनी कम है कि वो कुछ सिग्निफिकेंट टाउ नहीं दे पाएगा। डीएलम्बर्ट का नाम तो सुना होगा आपने, डीएलम्बर्ट का नाम तो सुना होगा आपने, ध्यान से समझियो। डीएलम्बर्ट you must have heard of. D'Alembert got trapped into this puzzle, that on the basis of ideal potential flow theory, I'm getting, using the Bernoulli's equation, I'm getting symmetric pressure distribution. So pressure force must cancel each other, and using, and if the fluid over which that is flowing over this cylinder is kind of air, then it is creating no significant drag, क्योंकि उसका म्यू काफी कम है, because it has very less mu. But when I'm measuring practically, I'm getting a lot of drag. फ्लूइड मैकेनिक्स की दुनिया में ये भी एक अनसुलझी पहेली बन गया, और इस अनसुलझी पहेली को कहते हैं डीएलम्बर्ट्स पैराडॉक्स। और इस प्रेंटल साहब ने ठेका लिया था, टेंडर उठ रहे थे अनसुलझी पहेली सॉल्व करने के। प्रेंटल साहब ने कहा जितनी अनसुलझी पहेली हैं पिछले 100-150 सालों से, मई प्रेंटल, मेरे इतने सारे शिष्य, वॉन कैरमैन, निकोरेट से, पॉल हर्सन, ब्लासियस, and all of them did in their respective fields, all of them really contributed something big. So my dear friends, D'Alembert's paradox is that on the basis of potential flow theory, Bernoulli's equation and everything, and superimposition of stream function, we are finding that pressure distribution must be symmetric, so it's not going to cause any drag force. On the other hand, if there is a fluid of negligible viscosity, then it should not cause any significant drag, because negligible viscosity means negligible friction force. But
एक सिग्निफिकेंट ड्रैग तो है। ये बन गया एक हिस्टोरिक प्रॉब्लम। दिस इज अ हिस्टोरिक प्रॉब्लम कॉल्ड D'Alembert's paradox. This is known as D'Alembert's paradox. And even if we assume that there is boundary layer, तब भी ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा। बाउंड्री लेयर अस्यूम भी कर लें अगर, तब भी इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई बाउंड्री लेयर का मतलब विस्कस इफेक्ट। विस्कस इफेक्ट तो लगभग ना के बराबर है एयर के कारण। ड्यू टू एयर, viscous effects are already negligible. So even if we assume viscous effects or boundary layer to be present, even then we are not able to explain this. So it has to be the pressure drag. If practically we are measuring and there is a lot of drag, it has to be the pressure drag, but caused by the viscous effects. विस्कस इफेक्ट्स के कारण खुद ड्रैग नहीं आ रहा, और प्रेशर ड्रैग अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेशर ड्रैग ही है। प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं तो हमें काफी ड्रैग दिख रहा है। तो D'Alembert's पैराडॉक्स ये है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? विस्कस इफेक्ट्स के कारण कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सारा प्रेशर ड्रैग क्रिएट करेगा। ड्यू टू द विस्कस इफेक्ट समथिंग इज हैपनिंग that will create a lot of pressure drag. Viscous effects के कारण, viscous effects मैं explain कर चुका हूं वेंचुरीमीटर में। Viscous effects के कारण यहां बाउंड्री के पास बैठे हुए पार्टिकल्स बहुत कम वेलोसिटी पर होंगे, और वो बहुत कम वेलोसिटी पर होंगे तो वो ऑपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट, जब प्रेशर धीरे 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 बिल्डअप होने लगेगा, एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी कमेगी और प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा तो ऑपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट के अंडर में आकर, ऑपोजिट प्रेशर ग्रेडियंट के अंडर में आकर जो बाउंड्री के पास बैठे हुए पार्टिकल हैं वो बैक फ्लो मार देंगे, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, और इसलिए यहां एक फ्लो की डेफिशिएंसी आ जाएगी। एंड देयरफॉर वी विल हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लो, वी विल हैव एन एब्सेंस ऑफ द फ्लो। There will be a low pressure zone or low pressure region created at the back side of the body. At the back side of the body एक low pressure zone create होगा. There will be a low pressure zone created there known as wake. इस तरह से particles के सेपरेट हो जाने की फिनोमिनन को कहते हैं, ऑपोजिट या पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट या एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के अंडर में सेपरेट हो जाने की फिनोमिनन को कहते हैं सेपरेशन। दिस इज कॉल्ड बाय द नेम सेपरेशन। सेपरेशन के लिए ये बात याद रख लो दैट, हाँ फिर मैंने बताया नहीं, सेपरेशन कहते हैं, फिर सेपरेशन के कारण होगा क्या? सेपरेशन के कारण जो हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था सिमेट्रिक। एक्चुअली क्या होगा? एक्चुअली पीछे फ्लूइड पार्टिकल्स ही नहीं है, और फ्लूइड पार्टिकल्स ही नहीं है तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन पीछे जाने पर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। ऑन द बैक साइड प्रेशर विल बी मच लेस। On the back side, pressure will be much less. On the front side, we still have the pressure. This image explains pretty much everything. This image explains pretty much everything. और इस तरह से प्रेंटल साहब ने बताया कि यार बाउंड्री लेयर ही सेपरेट हो जाती है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन occurs. हाँ, in case of laminar, there is no mixing, so there is a wide wake and we have more pressure drag because of that wide wake. And in case of turbulent, there is a lot of mixing. In case of laminar, there is no cross mixing, so there is a wide wake present, wide absence of flow.
and that causes a lot of pressure drag. In case of turbulent, there is a mixing, so that mixing reduces that effect. वो mixing के कारण effect reduce हो जाता है, वो पीछे भी जाकर particle mix होते हैं, तो एक narrow बहुत छोटा सा wake create होगा, और इसलिए पीछे भी pressure build up हो जाएगा. If there is a lot of turbulent flow, even at the back side pressure will build up. Okay, and this is what is used practically. In case of gold ball and all, we create these cavities. We create these cavities so that इनसे टकराकर flow turbulent हो जाए, so that once the air strikes with these cavities, then flow becomes turbulent. Cool. And even in case of aeroplane wings, we have vortex generators. Vortex generators are there, eddy generators are there. तो वो पीछे के साइड टर्बुलेंट क्रिएट करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि एयर मिक्स ना होने पाए और बहुत सारा वेक क्रिएट हो जाए और बहुत सारा ड्रैग प्रोड्यूस हो. And there will be a lot of drag coming in that case. That at the front you have a lot of pressure, at the back you have little pressure. Keep in mind that separation को लेकर कुछ questions आपसे पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला observation, it will be caused by positive or adverse pressure gradient. It will be caused by positive or adverse pressure gradient. सर ये तो इधर की तरफ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों कहते हो आप बार बार? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि P से P plus dP हो रहा है. It's becoming from P to P plus dP. It's becoming P to P plus dP. दूसरा, flow separation, first observation, it will be caused only when there is a positive pressure gradient or adverse pressure gradient. Second observation, in normal conditions, velocity profile is like this, but during the backflow, velocity profile comes backward like this under positive pressure gradient. Positive pressure gradient के अंडर में आकर वेलोसिटी ऐसे चिपक जाती है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऐसी हो जाती है. एक समय ऐसा आता है कि वेलोसिटी ही नहीं बाउंड्री पर वेलोसिटी का स्लोप भी 0 हो जाता है. एंड d2y by dy2 जो जनरली नेगेटिव था वो बाउंड्री पर पॉजिटिव होने लगता है. So flow separation के लिए please do remember these observations. Observation number 1, boundary layer separation is caused only when positive pressure gradient or adverse pressure gradient is present. Observation number 2, boundary layer separation is caused only when second derivative of velocity near the boundary is positive. ये आप वहां से भी समझ सकते हो नेवियर-स्टोक्स से. At the point of separation, du by dy is equal to 0, whereas second derivative is greater than 0. मैंने ये यहां शो किया है. At the point of separation, जब एकदम पार्टिकल आगे जाने से रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, अब वो उधर खाई है, यहां से कैसे कूदूं मैं, खुद ही को करके बुलंद बंदा चढ़ा जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से पूछा अबे उल्लू के अब उतरेगा कैसे. हाँ, सो खुद ही को करके बुलंद बंदा चढ़ा जैसे तैसे. And then after that, it's not going to fall down here. Opposite pressure gradient के चक्कर में आकर इधर ही रुकेंगे, ये इधर ही रुकेंगे या वहां से ऊपर चले जाएंगे. And that's how you have the wake getting created. So my dear friends, at one particular section, that effect will be so much that particles will strike back. They will have a kind of backflow. And a kind of backflow means not only u value is 0 at the boundary, but du by dy, velocity profile will become flat near the boundary.
it will become very much flat near the boundary. So that's why at the point of separation, du by dy is 0, but second derivative is positive. Observation number 4. Separation results into deficiency of the flow at back of blunt bodies, causing a low density pressure zone known as wake. Observation number 5. The best way to avoid separation is to reshape the blunt bodies so that diversion of fluid occurs very slowly. Aha. Life comes to a full circle. Life comes to a full circle जब हम पाते हैं कि हम वेंचुरीमीटर पे वापस पहुंच जाते हैं, जब हम पाते हैं कि वेंचुरीमीटर पे हम वापस पहुंच जाते हैं कि वेंचुरीमीटर में भी तो सीखा हमने कि अरे डाइवर्जिंग पार्ट को धीरे 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 डाइवर्ट करो ताकि एरिया धीरे धीरे बढ़े, एरिया धीरे धीरे बढ़े तो वेलोसिटी धीरे धीरे कमे, वेलोसिटी धीरे धीरे कमे तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़े, और प्रेशर धीरे धीरे बढ़े तो ऑपोजिट प्रेशर फोर्स स्ट्रांग ना हो, ऑपोजिट प्रेशर फोर्स स्ट्रांग ना हो तो बैक फ्लो नहीं होगा. So best way to avoid separation or formation of wake is that diverging part should provide as little slope, as small rate of change as possible. Slow rate. So magnitude of adverse pressure gradient would be negligible, and molecules, even those having very less kinetic energy, will easily flow against very negligible adverse pressure gradients. अरे बढ़ाओ, but धीरे 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 बढ़ाओ. And that's something you see all over the nature. That's something you see all over the nature. That's something you see all over the nature. At 5 meters per second, पत्तियों को रिकॉर्ड किया गया और पत्तियां अपना शेप ऐसे रखती हैं. 10 मीटर पर सेकंड विंड वेलोसिटी पर पत्तियों का वीडियो बनाया गया और वो अपना शेप ऐसे रखती हैं. 20 मीटर पर सेकंड विंड वेलोसिटी पर पत्तियां अपना शेप ऐसे कर लेती हैं. मछली का शेप आप जानते ही हो, या बहुत सारे वाटर बॉर्न क्रिएचर्स के लिए. So they know that the area change has to be very small. The flow area of the water has to, देखो जाते समय ऐसा कुछ नहीं है. When you're reducing the area of flow of water, you're reducing at a heavy rate. But when you're increasing the flow area back, you're increasing that flow area slowly so that velocity changes slowly, pressure changes slowly, and there is negligible value of opposite pressure gradient. There is negligible value of opposite pressure force. Cool. So aerofoil design का बड़ा ही महत्व है. ये स्लाइड यहां होनी चाहिए थी. चलो मैं बाद में पीडीएफ में कर दूंगा. I'll do that in PDF. Now, to simulate the cylinder, we have earlier superimposed source and sink and uniform stream and source and sink. Now we are, कितने potential flow पढ़े थे आपने? Uniform, source, sink and free vortex. Free vortex, irrotational vortex. Huh? Now let us mix that also. But flow over a cylinder में वो क्यों आएगा? मान लो फ्लो ओवर फुटबॉल हो लेकिन फुटबॉल खुद स्पिन कर रहा हो. अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट में बॉल इन स्विंग और आउट स्विंग कैसे होती है.
अब मैं आपको बताऊंगा दैट बेंड इट लाइक बेकहम क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेसी और रोनाल्डो किस तरह से हवा के इफेक्ट को यूज करते हैं चकमा देने के लिए। दैट हाउ a particular cylinder, if it is spinning also, has some fantastic effects created. Let us, to simulate the flow over a cylinder, we considered superimposing uniform source and sink. That gave us the azimuthal velocity, 2u infinity sine theta. Now let us also superimpose the free vortex. Free vortex is written as vortex strength upon 2 pi r. फ्री वर्टेक्स को हम लिखते हैं वर्टेक्स स्ट्रेंथ अपॉन 2 पाई आर, वर्टेक्स स्ट्रेंथ अपॉन 2 पाई आर। अभी उसको भी मिला दो, उसको भी मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला देंगे तो होगा क्या? मिलाने से वी आर गोइंग टू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। नाउ वी थीटा एक तो यूनिफॉर्म और सोर्स और सिंक से क्रिएट हुआ, जो पहले ही हमने सुपर इम्पोज किया था। एक और फ्री वर्टेक्स मोशन हमने सुपर इम्पोज की बिकॉज ऑफ स्पिनिंग फुटबॉल। If the football is spinning, there is one more motion created, that is like superimposing a free vortex into the motion. That's like motion में free vortex भी superimpose कर दिया further. Okay? But एक मिनट यही explain करता हूं। So अभी होगा क्या? Now what is going to happen is that at one point that spinning velocity will reduce. Suppose this velocity is like this, and suppose the football or the cylinder is rotating or spinning in anti-clockwise sense. Let's say it is rotating in anti-clockwise sense. If it is rotating in anti-clockwise sense, then due to that there is one more velocity given to the air, and that velocity given to the air at the bottom is assisting the air's velocity, is assisting the air's velocity, is assisting the air's velocity. So overall velocity becomes more. And if the overall velocity becomes more, if the overall velocity becomes more, pressure becomes less. On the other side, air's already existing velocity at the surface of the cylinder is now opposed by this spinning action. So spinning action के कारण यहां oppose हुआ तो resultant velocity reduces. As the resultant, ये ignore करना, as the resultant velocity reduces, pressure increases. One side pressure becomes more, another side pressure becomes less. So stream के perpendicular एक force create हो गया, एक lift create हो गया. So if the path of the football was like this, now all of a sudden football will also have a force acting perpendicular to the motion. This is called Magnus effect. इसे हम लोग कहते हैं Magnus effect. क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं Magnus effect. This is known by the name Magnus effect. यहाँ मैंने क्लास में stagnation point कैलकुलेट करवाया कि पहले आपने देखा था एक स्टैटिक सिलेंडर में स्टैग्नेशन पॉइंट ये था. इन केस ऑफ स्टैटिक सिलेंडर stagnation point was at theta is equal to 0.
stagnation point was at theta is equal to 0. But now, since there are two velocities, one due to the flow of the stream, that due to that we have 2u infinity sine theta at the surface of cylinder. Another is due to the spinning action of the cylinder. दूसरा सिलेंडर के स्पिनिंग एक्शन के कारण बाहर बैठे हुए एयर को एक फ्री वर्टेक्स मिल रहा है. हाँ, ये याद रखना, उस फ्री वर्टेक्स पार्ट का velocity at r is equal to r will be same as solid cylinder due to no slip condition. टोर्नेडो ऐसे ही तो क्रिएट होता है. बवंडर, सेंट्रल पार्ट forced vortex, outer part free vortex. Central part becomes the forced vortex, outer part becomes the free vortex. My dear friends, you just calculate v theta and equate it to 0 and that will give you, given u infinity, given r के लिए किस एंगल पर होगा stagnation point. So यहाँ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करके मैंने दिखाया है और बताया भी है कि प्रैक्टिकली भी इसको मेजर किया जाए तो ऐसा ही आता है. That is, stagnation point will be at some, if it is spinning, intuitive है कि ये आने वाली स्ट्रीम को ऊपर खींच ले जाएगा, 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 ऊपर खींच ले जाएगा. It will drag the upcoming stream upside. Cool? Then this is something very important. This is something very important. This is not PYQ, this is UIQ. This is upcoming year question. आज तक तो गेट के इतिहास में कभी ये नहीं आया, लेकिन I can bet that होगा टच ये. This will be touched. What? Giving you that pressure distribution which we derived and asking you to calculate the lift not by CL into half rho u infinity square into area shortcut, but by fundamentals integrating the pressure. But by fundamentals integrating the pressure over the surface area of the cylinder. Actually, we already know that pressure at any theta can be written as free stream pressure plus half rho u infinity square using the Bernoulli's equation. If I apply Bernoulli's equation between this free stream and any point at theta angle, then velocity मुझे पता है, एक तो free stream motion के कारण सिलेंडर के सरफेस पर velocity, दूसरा एयर की velocity सिलेंडर की मोशन सुपरइम्पोज होने के कारण. Due to the cylinder's motion superimposing, there is one more velocity. So if I simplify, I get pressure as a function of theta like this. अब इस केस में पोटेंशियल फ्लो थ्योरी अगर हम यूज करें तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी something like this. Now I can calculate the lift force by knowing the pressure as a function of theta and then integrating it with respect to area. Viscous component का effect negligible होगा क्योंकि air का viscosity negligible होता है. Because air viscosity is negligible, therefore viscous component effect will be negligible. My dear friends, remember this, rho u infinity KL, where L is the length of the cylinder, where L is the length of the cylinder. Rho u infinity KL, याद रखना, कभी अगर just in case K ना given हो, तो सिलेंडर के सरफेस पर K by 2 pi R, जो कि ये फ्री वर्टेक्स पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V is equal to R ओमेगा जो कि सॉलिड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को इक्वेट कर देना. Just in case if this
K is not given to you, then to find out the K, equate the free vortex part of the spinning of air around the football and V is equal to R omega part of the football itself. That will give you the K value. उससे आपको K मिल जाएगा. अब हम लोग आएंगे माइक्रो पार्टिकल्स पर या माइक्रोस्फेरिकल बॉडीज पर. Now we'll come to microparticles or microspherical bodies. Basically, every microparticle can be treated like a spherical thing. एक माइक्रो पार्टिकल, एक बहुत छोटे पार्टिकल को नेचुरली आप एक स्फेरिकल की तरह से देख सकते हैं, एक स्फेयर की तरह से देख सकते हैं. बहुत छोटा साइज है, इनर्शिया लगभग ना के बराबर है, ड्रैग हम लगभग मान सकते हैं टाउ इंटू ए. टाउ को हम लोग लिख सकते हैं म्यू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, क्योंकि डायमेंशंस एक पार्टिकल के सभी तरफ एक जैसे ही होंगे. एरिया को हमने रफली एल स्क्वायर लिख दिया, डेल्टा वाई को रफली एल लिख दिया, तो अल्टीमेटली हमें मिलता है म्यू वी एल. सो ड्रैग, shear into area, shear is mu delta u by delta y, and delta u is v minus 0 upon L, and area is L square. So I get mu VL. Now, actual sphere, स्टोक ने फाइंड आउट किया mu VL बस एक कांस्टेंट फैक्टर. स्टोक through his experiments on actual sphere, actually it can be theoretically proved. This is called Stokes law, and ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा. Even in 12th you must have studied this, that एक spherical बहुत छोटा स्फेयर अगर पानी में या किसी भी फ्लूइड में फ्लो कर रहा हो या मूव कर रहा हो, तो उस पे एक ड्रैग, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा. दैट ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 3 pi mu vd. Mu vd is as logical as I explained. 3 pi is a constant factor. हाँ, it is valid actually for very small particles. ये बहुत छोटे particles के लिए ही valid है, ये याद रख लेना. छोटे particles मतलब जिनका Reynolds number बहुत कम हो, corresponding to which Reynolds number is very small. Reynolds number when becomes very small, basically particles are very small, and very small particles have, I mean we usually say ना कि बाकी जानवरों को देखो कितने मस्त रहते हैं, इंसान की लाइफ को ही ऊपर वाले ने सबसे स्ट्रगलिंग बनाया है. अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो तो आप अंडर वाटर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना, क्योंकि उनकी लाइफ से ज्यादा स्ट्रगल और कहीं नहीं है. वो चाहते हुए भी मूव नहीं कर सकते. इफ दे ट्राई टू मूव दे डोंट हैव इनर्शिया. हमारे साथ क्या होता है कि हम थोड़ा दौड़ जाएं अगर, तो फिर थोड़ा और दौड़ जाएंगे. If we run, we'll keep running because of a lot of mass we are having. These microorganisms don't have mass, they have negligible mass. So swimming करते समय भी आप देखते हो ना कि एक stroke लिया हमने, तो we actually go along certain length. These microorganisms, they don't have inertia. So no matter how hard they try, they can't swim. They usually can't swim. Their life is like hell. No matter how much stroke they take. हम तो पानी में जब तैरते हैं तो एक स्ट्रोक लेते हैं तो फिर हम एक ठीक ठाक डिस्टेंस स्वीप कर जाते हैं. We sweep certain distance after that stroke because of our inertia. These microorganisms, they don't have inertia. So they, even if they move, their inertia will not continue their motion further. Cool? Such small sizes make the life of microorganisms a hell. And such scenarios are known as creeping flow. इतना creep होता है, इतनी struggle है चलने में भी, that such flows where Reynolds number is so less are known by the name creeping flow. So for creeping flow, we have Stokes law valid, 3 pi mu vd for spherical particles having Reynolds number value much less than 1. अभी इसको थोड़ा rearrange करेंगे.
3 पाई एंड म्यू को नीचे ले जाएंगे वी डी, रो इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस वी इंट्रोड्यूस डी इंट्रोड्यूस 4 इंट्रोड्यूस। नाउ वंस अगेन सभी लोग खड़े होकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करेंगे। बाबा एक बार फिर से प्रकट हो चुके हैं। सो वी हैव एंड ऑफ द डे 12 into pi d square by 4 into half rho v square and Baba. So basically we have projected area pi d square by 4 into half rho v square into 24 divided by Reynolds number, something where today's journey was started, something where today's journey is getting ended, life comes to a full circle. यहीं से हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी कि कुछ भी हो, एक स्फीयर के ऊपर से फ्लो हो या एक सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर से फ्लो हो, एक मछली के ऊपर से फ्लो हो या दो पैरेलल प्लेट्स, दो जर्नल और बियरिंग के बीच में लुब्रिकेंट फ्लो कर रहा हो, एक कार के ऊपर से फ्लो हो या आपकी आर्टरीज और वीन्स में ब्लड का फ्लो हो रहा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हर बार drag coefficient has to be function of 1 upon Reynolds number. Drag coefficient has to be a function of 1 upon Reynolds number. Drag coefficient को 1 upon Reynolds number का function होना पड़ेगा. Then there is a miscellaneous topics. Miscellaneous topics में बस आपको याद रखना है दो और बाउंड्री लेयर थिकनेस के डेफिनेशंस के बारे में, एंड दोज आर इन फैक्ट, मैं आपको बता देता हूं जितनी भी सारी चीजें याद रखनी है। पहली, आपने ये इतना देखा था, वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन फॉर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। अब याद रख लो, वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन फॉर प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट। अगर प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट हो और फिर से हम पूरी इंटीग्रल एनालिसिस करें कंट्रोल वॉल्यूम की, तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, और वो बड़े से एक्सप्रेशन में ये तो अपीयर होता है, तो जिसे हमने थीटा नाम दे दिया था, वैसे ही एक और इंटीग्रल अपीयर होता है जिसे लोगों ने डेल्टा स्टार नाम दे दिया। इट हैज बीन गिवन द नेम डेल्टा स्टार, एंड देन इट कैन बी सिंप्लीफाइड इन टर्म्स ऑफ CF वैल्यूज। प्रूफ इंक्लूडेड रहेगा PDF में, एक बार देख लेना आप। जीरो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए टाउ वॉल इज इक्वल टू रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर डी थीटा बाई डी एक्स, टाउ वॉल अपॉन हाफ रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर is CF, so CF is equal to 2d theta by dx. But in case of pressure gradient also present, the von Karman's integral momentum equation changes. It now has more terms present in which theta is representing u by u infinity 1 minus u by u infinity dy, and in this delta star is representing simply 1 minus u by u infinity dy. अब एक बात मैं यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये डेल्टा स्टार लोग रटते हैं और ये थीटा भी लोग रटते हैं। एक्चुअली ये दोनों पैदा होते हैं वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल एनालिसिस के समय। एट द टाइम ऑफ वॉन कैरमैन्स इंटीग्रल एनालिसिस they just appear. After that they have been defined as ये displacement thickness और वो momentum thickness. They actually, during the integral analysis of von Karman, they actually appear. After that we have defined them as displacement thickness and momentum thickness. Dimensionless form में ये दोनों इक्वेशंस जीरो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए ये ऐसी दिखने लगती है, नॉन जीरो प्रेशर ग्रेडियंट के लिए ऐसी दिखने लगती है। फॉर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक दिस, फॉर नॉन जीरो प्रेशर ग्रेडियंट इट लुक्स लाइक दिस। डेल्टा स्टार और थीटा के रेशियो को कहते हैं शेप फैक्टर, और वो अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा स्टार ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ज्यादा होगा।
डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का सिग्निफिकेंस होता है कि स्ट्रीमलाइन कितनी शिफ्ट हो रही है ऊपर, सो सेपरेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे. कीप दिस इन माइंड दैट देन देयर विल बी more chances of separation. Delta star can be calculated just by evaluating the integral velocity profile चाहे जैसी हो. Theta can be calculated. ऐसे ही एक और टर्म अगर एनर्जी इक्वेशन अप्लाई की जाए तो आएगा, और उसे हम कहते हैं एनर्जी थिकनेस. हमने हमने जब मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ, तो डेल्टा स्टार और थीटा अपीयर होते हैं. डेल्टा स्टार विच इज दिस इंटीग्रेशन एंड थीटा विच इज दिस इंटीग्रेशन, दे अपीयर्ड while using momentum equation on external flow. Similarly, one more quantity like this appears if we would use energy equation on external flow. This integral is known as displacement thickness. This integral is known as momentum thickness. This integral is known as energy thickness. ठीक है. अभी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, ये तीनों के फॉर्मूलाज याद रख लो, आप काम आएंगे आपको. मेक श्योर दैट यू मेमोराइज द फॉर्मूला ऑफ displacement thickness, momentum thickness, energy thickness. They will always be very important things. हाँ, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी याद रख लो, क्यों कहते हैं इन्हें डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम या एनर्जी थिकनेस. वैसे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा दिमाग का फितूर है. ये भाई मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई की हमने कंट्रोल वॉल्यूम पर, इस इतने कंट्रोल वॉल्यूम पर, on this much control volume, on this much control volume, we apply momentum equation. यहां से पास होती हुई एक स्ट्रीम लाइन पर मैंने लिया है ये कंट्रोल वॉल्यूम. तब ये अपीयर होते हैं. मैं क्या करूं, ये वाला मोमेंटम थिकनेस और ये वाला अपीयर होते हैं. और ऐसे ही इसी कंट्रोल वॉल्यूम पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई की जाए या एनर्जी इक्वेशन, तो ये अपीयर होगा. दे विल अपीयर, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट माय डियर फ्रेंड्स, still there is some nazariya, some interpretation that can be given to them. कुछ नजरिया, कुछ इंटरप्रिटेशन दिया जा सकता है उन्हें. क्या दिया जा सकता है, क्या नजरिया दिया जा सकता है, क्या इंटरप्रिटेशन दिया जा सकता है? दैट ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि ये डेल्टा स्टार वो मूवमेंट है अपवर्ड प्लेट का, जितने अपवर्ड मूवमेंट से प्लेट मास फ्लो को उतना ही कट कर देता फ्री स्ट्रीम के, जितना मास फ्लो बाउंड्री लेयर के कारण कट हुआ. बाउंड्री लेयर के कारण जितना मास फ्लो इस डेल्टा थिकनेस में कम हो गया. You see there is a missing mass flow. You see there is a missing mass flow. आप देख पा रहे हो एक missing mass flow दिख रहा है आपको. So if you see this much earlier, there is u infinity, u infinity, u infinity, u infinity present everywhere, and now there is only u present. So u infinity से थोड़ा तो गायब हो गया. So in a delta thickness, how much is the loss of mass? Loss कितना हुआ? वो loss जो हुआ वो ऐसा प्रूव किया जा सकता है कि अगर प्लेट को इस डेल्टा स्टार अमाउंट से ऊपर शिफ्ट करने पर जो लॉस होगा वो उस लॉस के बराबर होगा. There is a loss, there is a missing flow due to boundary layer. Then if I shift the plate upward by delta star amount, then it can be proved that shifting the plate upward by delta star amount would also cause the same amount of loss to the mass flow rate as boundary layer is causing. That's why it is called displacement thickness. Also, it is the
डेल्टा स्टार के मल्टीपल सिग्निफिकेंस हैं. ऑल्सो इट इज द डिस्टेंस बाय विच स्ट्रीमलाइन शिफ्ट्स इटसेल्फ. यहां से पास होती हुई स्ट्रीमलाइन खुद को जिस डिस्टेंस से वर्टिकली डिस्प्लेस कर लेती है वो भी यही होगा. सिमिलरली मोमेंटम थिकनेस वो डिस्टेंस है जिससे, देखो एक तो मिसिंग फ्लो है तो मिसिंग मोमेंटम होगा. अब अगर इतनी डिस्टेंस से मैं प्लेट को अपवर्ड शिफ्ट कर दूं तो उसके कारण जो मोमेंटम लॉस दिखेगा वो इस मिसिंग फ्लो के कारण, बाउंड्री लेयर के कारण मोमेंटम लॉस के इक्वल होगा. दैट विल बी इक्वल टू दिस वन. कूल. ओहो, यहां मैंने प्रूव करके दिखाया है that by shifting the plate with delta star amount we are getting this much loss of the mass flow, and because of boundary layer we are getting this much, which is the same again. One last thing, sometimes you might encounter a word called circulation. Circulation is defined as V dot ds, and it can be proved. It will be vorticity cross area. Of course, ये वाला सिर्फ रोटेशनल फ्लो के लिए. अगर फ्लो इरोटेशनल होगा तब भी सर्कुलेशन डिफाइंड होगा. सर्कुलेशन तब भी डिफाइंड होगा लेकिन ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा. सर्कुलेशन वुड बी डिफाइंड इवन देन बट दिस रिलेशन विल नॉट बी वैलिड. मुझे उम्मीद ही नहीं वरन विश्वास भी है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी. वैसे ये मैराथन रिवीजन सेशन है बट फिर भी आई होप एंड आई सपोज दैट somehow I would have been successful in imparting as much knowledge of fluidum mechanics sum to your bucket as possible. Make sure that you count you make every minute count in these last remaining 40-50 days, because ये opportunity अब आपको सीधे 1 साल बाद ही मिलेगी. This opportunity you are going to get after 1 full year. So there is still time. Get up and get crazy. Get up and get mad about your goals and stop not till you achieve them, till you realize them. Because जिंदा ही क्या वो जो जिंदा दिली ना हो. तो पागलपन, वो सफलता की जिद, वो झकझोर देना खुद को, वो होना चाहिए. That must be there. Make sure that you keep yourself full of positivity and work as hard as possible in these remaining 40-50 days so that there's nothing that can beat you. Practice आज ही होगा, नहीं practice आज नहीं होगा. Practice होगा कल, और कल होगा आपका इंडस्ट्रियल का भी मैराथन सेशन. तो देखते 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 हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 50-55% सिलेबस, इनफैक्ट ज्यादा 60% सिलेबस खत्म कर डाला इन मैटर ऑफ come on, a round of applause for yourself. In a matter of around 16-17 days we have finished 60% syllabus of whole mechanical engineering. 60-65% syllabus of whole mechanical engineering. That's actually a big deal. Please send FM notes. Of course.
I'm sending it, don't worry, भेजता हूं। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मचाना जारी रहे।